Hello. Okay, so a very good morning to all of you. Uh, okay, guys. So a very good morning to all of you. My name is Mohit teacher, and I welcome you all on the YouTube channel of TEQIP classes. So this is all about me, and today we are going to discuss about the numerical problems, but we call it as a marathon. Okay, because in a online education system, it's very difficult, like more than 1 hour to engage the student between the student and the teacher. So if you are getting banned 3 hours, 1 hours, so we can say it's like a rally or a marathon. So that we are going to discuss today. So I'm just briefing you about that our initiation. That just 2 minutes I will take, then we'll start because I have a today I have a 20 problems and like I have also spent time on that. Okay, so it will take around complete 3 hours. Okay, so we are TEQIP faculties basically, okay, and we are working for the students, those who want to pursue their higher studies, uh, MTech or MS, or like this students, those who are preparing for the competitive examinations, okay, like AE and JE and engineering services, GATE, okay. So for that, from past 3 months, we are dedicatedly working, and our my other colleagues are also performing very well on our YouTube channel by giving their delivering their lectures. Okay, so uh, I and 2 days back we have launched our website, that is www.TEQIPFaculties. It's here. Uh, TEQIPFaculties.com. So, like the students, those who are preparing for the GATE examination or any other competitive examination, they can register themselves here because it's completely free, and you can access all the. Good morning, Swami Ranjan. You can access all the test series that we are going to organize in from the mid of July. Okay, so this is all about us, and let's start. So once again, I welcome you all on the Let's Crack the Gate along with the TEQIP faculties.
And these are our social media platforms, so you can follow us, and if you have any queries, then you can write us on this mail ID, and you can register yourself on this through this website. Okay, so let's start. Okay, so okay, one more thing is, like, whatever the problem that we are going to discuss, that has been covered in the previously what lectures I have taken. Some of the problems I have covered, and good morning, Senapati ji. So some of the problems are new, okay, and these are wonderful problems. So देखिए, as I said, I have spent also like I just checked that how much time I really taking to practicing these 20 problems. So it was like 2.5 hours. तो देखिए, जब भी कोई discussion होता है, then obviously there is more than just time double हो जाता है. तो अगर double होगा तो it will be like 5 hours, okay. So I have to finish it within 3 hours, and you should also target like we have to finish it in 3 hours, because as Sunday hai, the purpose of Sunday in 3 hours is like when you will give the gate examination, it will be Sunday or Saturday, okay, and there will be 9 to 12 timing as well as 2 to 5 timing. So at least मैंने एक से start कर दिया है, ठीक है. So let's start. Please be ready with your the calculators, okay. A condition in the cutting operations are V is given to you, that is generally V, if capital V is written, then it means we are assuming that is a cutting velocity, okay. So this is V is given to you. T, that is uncut chip thickness, that is 0.25 mm. B, that is width, is given to you, that is 3 mm. Break angle is 10 degree. Deformed chip thickness, that is TC, is given to you, that is 0.54 mm. And we have to calculate the following things. So first is the material removal rate, okay. So material removal rate के लिए देखिए, we have studied this part, okay. Initially this is your T, okay. इसका कुछ width है, that is B, okay. And from here we have to start, okay. Like initially this workpiece was like this, okay. So initially we are keeping the single point cutting tool over here, and we are moving toward this side, okay. So how much material removal rate we have to consider, okay. So the material removal rate will be given as MRR, will be given as, like, what is the cross sectional area over here, okay. What is the cross sectional area? Cross sectional area will be, that is B is the width and T is the uncut chip thickness or depth of cut, we can say in the beginning. So that is B into T, that is the cross sectional area, and with what speed we are moving in this direction. So that is the V, that is the cutting velocity. Horizontal velocity is nothing but the in this direction, that is a V, okay. So MRR will be equals to V into P into T, okay. So V is given to you, B is given to you, T is given to you. Just get the value. So V is 2. देखिए हमें mm cube per second में find out करना है, and this V is given to you in meter per second. So I am just multiplying with the 10 raised to power 3, ठीक है. B is that is width, already is given in 3 mm. Sorry, this is 3 mm, so this is 3.0, and T, that is 0.25, okay. So just get the value and tell me. Okay, so I have calculated it, right, it's 1500. Wherever it's like 1.5, it means that you are calculating in means if you will keep it 2, then that will be 1.5, but answer is asked in mm cube per second, so we have to keep that in mind, okay. So this V is given in meter per second, so you have to convert that in mm per second, so you have to multiply with the 10 raised to power 3. So when you will calculate this one, it will be like 1500 mm cube per second, okay. So this is your first answer. Okay, very good. Next is shear angle. So shear angle is phi. So first we get the approach. What is the approach? What is the formula that is available to us? So that is first is, that is tan phi. Okay, tan phi equals to R cos of alpha upon 1 minus R sin alpha. Okay, alpha is given to you, that is a break angle. Okay, great.
R is chip thickness ratio. So R is like R is equals to T by TC. Okay, so T is given to you, that is uncut chip thickness. TC is given to you, that is a chip thickness or deformed chip thickness. Okay, so first get the value of T R from here. So that will be like 0.25 T upon TC, that is 0.54. Okay, so from here I will get the value, that is what I am getting is, yeah, I'm getting it's 0.463. Is it correct? Please check along with it. Okay, क्योंकि मेरा भी गलत हो सकता है. It's not like मैं I am a teacher, so my all answer are correct. Okay, you should also check. Okay, so okay, great. Yeah, 463. Okay. So next is just put the value over here. That is tan phi equals to R. That is 0.463 into cos of alpha. Alpha is how much? That is 10 degree. Okay. Upon 1 minus 0.463 into sin tan. Okay. So just get the value of phi over here. Progressive here. Right. Very good. So just get the value from here of phi. 0.495. Very good. Yeah, right. It's a point, but that is of 10 phi, right? That is of 10 phi. 0.45, sorry, 4959. Okay, so this is the value that I'm getting of that is 10 phi. So from here, just inverse it. So you will get the value of phi, that will be equals to how much? Is it something like 26.375? Good morning, Michelle. After a very long time, I'm interacting with you. Is it correct? This phi value, what I'm getting is great. So like right, this is 26.375, right? So next is so this will be the second answer. Okay, and third is like chip and the shear velocities we have to calculate in mm per second. Okay, so okay, so this is VC. Like we know the relationship that is between the V, BC and VS. So that relationship is equals to V, that is cutting velocity, upon cos phi minus alpha, equals to, अगर VC की टर्म में लिखें, that is upon sin phi. Okay, and अगर VS की टर्म में लिखते हैं, that is VS upon cos of alpha. ठीक है? Is it correct? So what we have to find out, first we have to calculate the chip velocity. So chip velocity अगर calculate करना है, so just multiply, just take these two formulas. Okay, so because V is given to you, phi we have already calculated, and alpha is given to us. Okay, so just get the value of VC from here. So for this VC will be equals to V into sin phi upon cos phi minus alpha. ठीक है? V is how much? That is 2 meter per second. Okay, and okay, 2 meter per second. So mm per second में पूछा है, so can I multiply with the 1000? So this is 2000. Okay, and sin phi is how much? Recently we have calculated, that is 26.375. 26.375. Okay, upon cos phi, that is 26.375 minus alpha. Alpha is how much? That is 10 degree. Okay, so just get the value from here, that is VC. Just calculate this one and just writing this VS value. So VS will be equals to V into cos of alpha upon cos phi minus alpha. Okay, so this will be like 2000 into cos of alpha, that is 10 degree, upon cos of phi, that is 26.375 minus alpha, that is 10 degree. Okay, 926 point right, very good, Swaminathan. This is 926 point right 0.05, that is mm per second. Very good.
and Vs, that is shear velocity. Right, very good. This is 2000. If I write approximately, then it will be 2053 mm per second. Very good. This is Vs. Okay, so this is the last answer. Okay, so now देखिए यहाँ पे दो velocities जो हमने calculate किए, that is Vc and Vc and Vs. So if you will see this diagram, then whatever the tool that we are using over here, okay, the chip is coming out in this direction. So this is Vc, okay, and this is Vs. This is which is shear velocity. So obviously देखिए Vc की जो value है, that should be lesser than Vs. Okay, Vc is lesser than Vs because जितना मटेरियल आपका डिफॉर्म हो रहा है, अगर Vc अगर उससे ज्यादा हो गया तो मींस दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. ओके, बिकॉज हाउ इट कैन बी लाइक with what speed this chip is coming out from this shear area and Vc is greater than that cannot be possible. Okay, so please keep in mind this thing also. Always Vc value will be lesser than the Vs value. Please keep in mind. Okay, so let's move to the next problem. Okay, so this is the wonderful problem that has been asked in the GATE examination 2008 organized by the IISc Bangalore. Okay, so in a single point cutting tool, turning tool, the side rake angle means side rake angle is represented by the alpha s. Okay, orthogonal rake angle are equal means, okay, for a single point cutting tool, alpha s and alpha orthogonal rake angle that is represented by the alpha, not alpha b. Alpha b is a back rake angle. Please keep in mind. Phi is the principal cutting edge angle. देखिए अभी तक जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं या फिर मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ उसमें मैंने इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया है और मैंने ये प्रॉब्लम आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स भी कराई है. सो दैट इज दैट टाइम आल्सो आई रिटन दिस लैम्बडा ओनली. तो अभी भी मैं इसको लैम्बडा ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा इफ यू आर फॉलोइंग माय लेक्चर्स. ओके, सो लैम्बडा इज द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल. ओके, एंड इट्स रेंज इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री. ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी होती है. ठीक है, now the chip flows in orthogonal plane. ठीक है, the value of phi or the lambda is closest to, मतलब आपको lambda की value find out करनी है because that is in the range of 0 degree to 90 degree. So what exact value of that lambda will be, okay, among these four answers 0, 45, 60 and 90. So that we have to calculate. Now if you will see this question, then alpha s, that is a side rake angle. ठीक है, अब side rake angle है और orthogonal rake angle है, that is alpha. तो अल्फा एस हम किस में कंसीडर करते थे? इन एएसए सिस्टम. ठीक है, एंड अल्फा जो टर्म है दैट वी वर कंसीडरिंग इन द ओआरएस सिस्टम. तो इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन है ये ओआरएस और एएसए को कंबाइन कर रहा है. ठीक है, एंड फॉर दैट देयर इज सम फार्मूलास बाय द वे दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर रेगुलर लेक्चर्स. सो बट स्टिल चलिए ठीक है, मैं अभी उसको एक बार रिपीट कर देता हूं. देखिए there are some relationship between this ASA, whatever the angle is in ASA or ORS. okay, so that relationship देखिए उसमें आपको थोड़ा सा memorize करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि from where we are getting that formula that is not important, but हमारा question solve होना चाहिए. ठीक है, so for this like just write this is alpha s, that is side rake angle, alpha b, that is a back rake angle, and I, that is the inclination angle. Alpha is the orthogonal cutting angle. Okay, now there are four relationship between these angles. Okay, so just four relationship that we are going to find out. So just first write over here, that is sin lambda, cos lambda, sin lambda, cos of lambda for all. Okay, for all the equation, because there are four formulas, four angles are there. Okay, so there will be four relationship or we can say their values. Okay, now अब जहां पे भी लिखना है that is of 10. Okay, now first अगर मान लीजिए कि मैं
10 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, तो दिस इज 10 अल्फा, ठीक है। नाउ ORS को हम ASA से रिप्रेजेंट करेंगे, ASA को हम ORS से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि लाइक इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस अल्फा, इफ वी आर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा, देन इट शुड बी इन अल्फा S and अल्फा B. If we are calculating of alpha S value, then it should be in alpha and I value, I terminology. Okay, so now if it is alpha, then we have to rotate it in clockwise direction. So first, which angle is coming in? That is alpha S. So this is just right over here, that is 10 alpha S. ठीक है. Next, which angle? That is alpha B. So write this 10 alpha B. 10 alpha B. Okay. Now यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, that depends कि if you are rotating in clockwise direction, then it should be plus. If you are rotating in anti-clockwise direction, then it should be negative. ठीक है, तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किस डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ा? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सो दिस विल बी प्लस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, ठीक है, तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए, अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो अल्फा पहले आएगा, बट मुझे अल्फा नहीं चाहिए क्योंकि दैट इज ORS सिस्टम। ओके, मुझे ASA सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सो दैट शुड बी अल्फा B and alpha S. तो ठीक है, this is 10 I, फर्स्ट कौन सा आ रहा है? that is alpha B. so this is 10 alpha B, ठीक है। next is alpha S, so this is 10 alpha S, ठीक है। now clockwise और anti clockwise, ठीक है, so this will be minus, fine। now next is we are going to find out for the alpha B, ठीक है। देखिए अल्फा बी के लिए अगर इफ यू विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन देयर शुड बी अल्फा एस। तो ए से का ए से नहीं रह जाएगा, बट वी शुड मूव फॉर द इन टर्म्स ऑफ आई एंड अल्फा। सो फॉर दैट वी हैव टू रोटेट क्लॉकवाइज। सो 10 अल्फा बी, फर्स्ट कौन सा एंगल आ रहा है? दैट इज आई, देन इट इज अल्फा, सो देन इट इज 10 आई एंड दिस इज 10 अल्फा। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सो दिस विल बी प्लस, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एस, ठीक है। देखिए अल्फा एस के लिए अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, देन इट विल बी अल्फा बी। तो अल्फा बी से रिप्रेजेंट नहीं करना है मुझे, ठीक है, बिकॉज दैट इज इन अगेन ASA सिस्टम। सो फॉर दैट जस्ट कन्वर्ट इट इनटू ORS, so that for that we have to move in anti-clockwise direction. So this is 10 alpha S, first कौन सा आ रहा है? that is 10 alpha, this is 10 alpha, then it is I, okay, so this is 10 I। पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज है, सो इट विल बी नेगेटिव। सो प्लीज कीप इन माइंड दिस फॉर्मूलास, ठीक है। दिस इज द easiest trick what I feel is to memorize this formula, and please write this in your synopsis as well, because at the last time it will be helpful to you, okay। and please आप देखिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये फॉर्मूलाज ही नहीं है या फिर ये टर्मिनोलॉजी जो आपने लिखी हुई नहीं है, इंपॉर्टेंट इनका यहाँ पे ऑर्डर भी है, ठीक है। देखिए ऑर्डर अगर भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ अल्फा बी कर दोगे, यहाँ अल्फा एस कर दोगे, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ओके, सब फॉर्मूला उल्टे सीधे हो जाएंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड दिस ऑर्डर एज वेल, ओके। सो देखिए इसमें प्रॉब्लम में पूछा गया है, दैट इज okay, this is alpha S is given to you, and alpha S is equals to alpha, that is side rake angle is equal to orthogonal rake angle, ठीक है। तो देखिए हम we can use this formula as well, okay, we can use this formula because alpha is given to you and alpha is मतलब दोनों equal है, तो we can use this formula। but देखिए lambda चलिए ठीक है, that is a principal cutting edge, we have to find out that, there is no issue। but इसमें alpha b की टर्म आ रही है, तो अल्फा बी की टर्म के लिए कुछ हमें स्पेसिफिक गिवन नहीं है, ठीक है। सो जस्ट वी आर अवॉइडिंग दिस फॉर्मूला। व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटीज? अल्फा एंड अल्फा बी, सॉरी अल्फा एस, सो दिस नेक्स्ट इज दिस वन, ओके। सो इन दिस अल्फा एस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अल्फा, तो यहां से इक्वल हो जाएगा लेम्डा, दैट इज द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, वी हैव टू फाइंड आउट। आई इज द इंक्लिनेशन एंगल, दैट इज नॉट गिवन टू अस, बट a sentence is written that the chip flows in the orthogonal plane। ऑर्थोगोनल प्लेन का मतलब क्या है कि मींस इसका मतलब है कि इंक्लिनेशन एंगल जो है वो जीरो है, मतलब आपकी ऑब्लिक कटिंग नहीं हो रही है। मींस ORS अगर आप सिस्टम भी कंसीडर करते हैं, दैट टाइम आल्सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब इंक्लिनेशन एंगल जो है फॉर द ऑर्थोगोनल कटिंग दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जस्ट पुट दिस फॉर्मूला
and write just put these two value in this. Okay, alpha will be equals to alpha s. So from this will be like tan alpha equals to tan alpha into sin lambda, ठीक है, minus tan I, tan 0 कितना होता है 0, 0 into cos lambda, that is 0, so this will be 0, ठीक है. Now tan lambda will be cancel out, sin lambda will be equals to 1, and lambda 1, sin lambda 1 कब होता है, जब when the lambda equals to 90 degree, ठीक है. So this will be the answer. So which option will be D, ठीक है. क्लियर है आपको? If it is clear, then we should move forward. देखिए ये actually थोड़ा theoretical based था, तो that's why I proceed for this one. But whenever there is a numerical, I will prefer that you should go first. So is it clear to you? We should move forward, or if you have any doubt, you can ask me. Fine, great. Okay, so next problem is the we have to calculate the minimum minimum. Okay, next problem is minimum shear strain in orthogonal turning with a cutting tool of 0 rake angle is. Okay, so minimum shear strain we have to calculate. Okay, that time the value of rake angle is given to you, that is 0 degree. Okay, so shear strain का formula क्या होता है, that is epsilon. Okay, that is equals to cot of phi plus tan phi minus alpha, ठीक है. So now the value of shear strain is depending on two things. First is phi, that is shear angle, and alpha, that is a rake angle. So phi is not given to you, but alpha is given to you. Okay, so just put the value of alpha, that will be equals to cot phi plus tan phi minus alpha, so that will be equals to tan phi, ठीक है. तो cot phi को can be write like this, that is 1 upon tan phi, ठीक है, plus tan phi, ठीक है. Now what we have to find out, we have to get the we have to find out the value of minimum shear strain. Okay, so minimum shear strain मतलब हमें इसकी minimum value find out करना है. इसका मतलब क्या है कि जो इसका derivative है, that will be whatever the value of that we are getting tan phi over there at the derivative, that will be greater than 1. Okay, means that will be positive. So what I can say is what I want to say is, like, just consider tan phi equals to x, क्योंकि otherwise you have to थोड़ा derivation में देखिए जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कि that is epsilon, that will be equals to 1 by x plus x. इससे क्या होगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है. अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, that is हमें करना क्या, डेरिवेशन करना है, because we have to find out the minimum shear strain. Okay, so आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, that is d epsilon upon d of tan phi, ठीक है. तो देखिए phi के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन नहीं हो रहा है, tan phi के रिस्पेक्ट में हो रहा है. So that will become like जिनको बहुत अच्छे से आता है, that will also be confused over here. So just I am writing that is tan phi equals to x, and this formula will become epsilon equals to 1 by x plus x. Okay, so just derivate it with respect to x, so this will be equals to d epsilon upon dx. Okay, and 1 upon x, that is x raised to minus 1. So what will be the derivative for that, that will be equals to minus 1 by x square, ठीक है. x का डेरिवेटिव क्या होगा, that will be 1, ठीक है, and this value will be equals to 0. Fine, ठीक है. Is this derivation is clear to you? That's leggy. Fine, Weber, fine, sorry. So just we have to calculate this value. So just we are moving this side, this toward this side, right hand side. Okay, great. So this will be equals to 1 equals to 1 by x square, and this x square will be equals to 1. So just if you will take this root square, so this will be equals to x will be equals to plus minus 1. Okay, now there are both the values we are getting, that will be equals to plus 1 or minus 1. So what we have to do means when the shear strain will be equals to will be minimum. Okay, कब minimum होगा, when x जो value है that will be equals to that will be positive. Okay, so when it will be positive, it means x will be equals to plus 1. ठीक है, तो plus 1
x की वैल्यू को यहाँ पे रखिए, ठीक है। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला epsilon will be equals to 1 by 1 plus 1, so this will be equals to 2 or 2.0, ठीक है। So the option will be D. Fine, it's clear. If it's clear, then we move on the next problem. Fine. Now, please ready with the for the calculations. A cylinder is turned on a lathe. Okay, great. Orthogonal machining principle. The spindle rotates at 200 rpm. So the value of capital N is given to you. Axial feed rate is 0.25 mm per revolution. Okay, so the value of F is given to you, small f, because feed हम लेथ में किसमें लेते हैं, that is in mm per revolution. ठीक है, means mm that we are keeping this single point cutting tool toward this side, towards the workpiece, and revolution that is affiliated with the workpiece. Okay, because that is mounted on a chuck. So that is mm per revolution. The depth of cut initially that we have taken, that is small d, and that is 0.40 mm. Fine. Now the rake angle is 10 degree, means value of alpha is given to you. ठीक है. In analysis it is found that the shear angle is 27.75 degree, means value of phi is given to you. Fine. So what we have to find out, the thickness of the produced chip is. तो सबसे पहले देखिए अप्रोच देखते हैं कि व्हाट इज द अप्रोच. ओके, देखिए हमें प्रोड्यूस्ड चिप टीसी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो टीसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं, दैट इज आर, दैट इज अनकट चिप थिकनेस रेशियो. ठीक है, दैट इज इक्वल टू टी बाई टी सी. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू वी सी बाई वी, एंड यू कैन पुट ओवर हियर बिकॉज बट अगेन आपको वी भी गिवन नहीं है. ठीक है, तो ये नहीं यूज कर सकते. So from here this formula you can get the value of TC, but TC के लिए हमें RB चाहिए और TB चाहिए. T is uncut chip thickness, means depth of cut हम consider कर सकते हैं. ठीक है, बट अगेन आपका ये टर्निंग है, दिस इज नॉट द सिंपल ऑर्थोगोनल. ठीक है, सिंपल ऑर्थोगोनल कटिंग होती तो सिंपल ऑर्थोगोनल कटिंग का मतलब है कि लाइक दिस इज अ वर्क पीस एंड this is a single point cutting tool, so whatever the depth of cut we are giving over here we can consider that as a uncut chip thickness. but यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टर्निंग हो रहा है. टर्निंग का मतलब this is a single point cutting tool. Okay, now this is the depth of cut we have given. Okay, this is the depth of cut and this feed in this direction. Okay, that is in mm per revolution. So how we can get the value of that is T by TC? Means first that is we have to find out the value of TC, and for that we don't know the value of R, we don't know the value of T. But देखिए हमने during this lecture we saw मैंने एक derivation करवाया था आपको कि like whenever the T and width is not given to you, that time if it is a case of turning, then we can convert this feed and the depth of cut in terms of T and B. Okay, so what was the relationship that we calculated? That is T, that is uncut chip thickness, will be equals to F into sine lambda. ठीक है, ठीक है. Now and this is B, that is width will be equals to D upon sine lambda. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट. ठीक है, so just put the value of over here, that is R equals to T, that is F into sine lambda upon TC. ठीक है, F की वैल्यू अभी पता है, lambda जो है that is 90 डिग्री. ठीक है, वो 90 डिग्री क्यों है पहले मैं बताता हूँ आपको. And this is TC, so we can get the value of TC over here from, but we don't know the value of R. So for what we can do, that is we know the another formula, that is tan phi equals to R cos of alpha upon 1 minus R sin alpha. ठीक है, देखिए अल्फा आपको गिवन है, that is 10 डिग्री. ठीक है, फाई आपको गिवन है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, R की वैल्यू जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, पुट दिस वैल्यू ओवर R over here. F is given to you, lambda is 90 degree and TC will get the value of TC. Okay, so this is the approach. So let's go for it. So tan phi
will be equals to r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha. ठीक है. Now just put the value of phi, that is what is the value, that is 27.75. 27.75 equals to r cos of alpha. Alpha is how much? That is 10 degree. So this is alpha is 10 degree upon 1 minus r sin alpha, that is 10 डिग्री. ठीक है. सो एक काम करिए, इस वैल्यू को इधर ले आइए. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड फ्रॉम हियर कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम हियर. I also calculated. This value is 0.526. Okay, so this is 0.526 minus 0.0936 into r equals to 0.9848 r. Okay, so from here you will get the value of r. Can you tell me the value of r from here? Can anyone tell me the value of r from here? Right, 0.488. Very good, Soumya. It's 0.488. That's great. Okay, and this r value equals to t upon tc, that is t is f into sin lambda upon tc. Okay, now देखिए f की value that is 0.488. f will be equals to 0.25. Okay, 0.25 into sin lambda. Lambda is how much? That is 90 degree. देखिए मैं lambda 90 degree क्यों कह रहा हूँ? Because in this questions, problem number 2, ठीक है, if you will see the problem number 2, ठीक है, then in a single point cutting tool, ठीक है, the side angle and the orthogonal ray cutting angle are equal. देखिए ये condition basically standard है. ठीक है, ये standard क्यों है? क्योंकि देखिए जब भी हम orthogonal और ASC system की बात करते हैं तो क्योंकि कुछ इंक्लिनेशन लेते हैं ओआरएस में हम लोग, ठीक है, प्लेन को चेंज कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका अल्फा एस जो है वो अल्फा हो जाता है एंड अल्फा बी जो होता है दैट विल बी लाइक दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंक्लिनेशन एंगल. ठीक है, तो स्टैंडर्ड ये जो प्रॉब्लम थी बेसिकली सेकंड नंबर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट बेसिकली रैंडम प्रॉब्लम, दैट इज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. मतलब एक वैल्यू है आपका, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है. ठीक है, so you can always consider this lambda equals to 90 degree when this condition is given to you, that the chip flow in the orthogonal plane, that is if this condition is given to you, at that time you can always consider this lambda equals to 90 degree. ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड. तो देखिए ये मैं अपने मन से नहीं चूज कर रहा हूँ इसमें 90 डिग्री. आई कैन we already proved in the second problem. So that is in this problem also, if you will see, then orthogonal machining is given to you. Orthogonal machining का मतलब क्या है कि अगर आपको lambda ना भी दिया है then just consider this lambda equals to 90 degree. ठीक है, so just put the value over here, that is 90 degree, and this will be TC. So from here you will get the value of TC. So can you tell me the value? Right, very good, very good, Soumya. This is 0.51. Okay, this is 0.512. Okay, so this is in mm because that is in mm per revolution, but here when we are converting that will be in mm. Okay, so this is the answer. So which option will be
A. This is 0.511. Okay, so this is the option A. Let's move to the next one. So this is a similar problem. ठीक है, तो डेटा रीड करने की जरूरत नहीं है. Just go for the problem. That is in above problem. The coefficient of friction at the tool chip interface obtained using Ernest and the Merchant theory. तो हमें क्या म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो पहले पॉसिबिलिटीज देखते हैं क्या क्या है, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन. ओके, सो म्यू इज इक्वल्स टू फर्स्ट हम लोग दैट इज 10 बीटा यूज कर सकता हूं मैं, दैट इज 10 बीटा. ओके, उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज f by n यूज करके भी मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं. लेकिन f by n, f क्या है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एंड n इज नॉर्मल टू दैट. ओके, तो हमें यहाँ पे देखिए मर्चेंट थ्योरी जब भी हम यूज करते हैं तो f और n को हम fc और ft की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, हमें fc ना ही fc गिवन है ना ही ft गिवन है. सो व्हाट वी कैन डू, we do not use this formula. What we will use this formula, that is 10 beta. ठीक है, so this is the approach. Now how you will get the value of beta की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. It's mentioned that using the Ernest and the Merchant theory. ठीक है, तो जो हमने डेरिवेशन किया है, that is 2 phi plus beta minus alpha equals to 90 degree, that is that theory only. Okay, so that is 2 phi plus beta minus alpha equals to 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से देखिए फाई आपको गिवन है, अल्फा आपको गिवन है, यहाँ से आप बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे रखिए, यहाँ से आपको म्यू मिल जाएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस विल बी द वे. सो जस्ट फर्स्ट गेट द वैल्यू ऑफ बीटा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 phi, दैट इज पाई इज हाउ मच, दैट इज 27.75 डिग्री. ओके, प्लस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा इज हाउ मच, दैट इज 10 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 90 degree. Okay, so just get the value of beta and tell me how much. Anyone, can you tell me what is the value of beta? Uh, 44.5. Good, very good. I am also getting the same. Okay, this is 44.5, and just take this 10 of that, Soumya, and tell me the value of mu, because we'll put this value beta over here and get the value of mu. So just 10 beta, 10 44.5 degree. How much mu will be equals to? Rami, right, very good. This is 44.5, very good. Just take the 10 of it. Okay, how much you are getting? Mu. Very good. 0.9826. Okay, right, very good, very good. 0.9826. Okay, that's great. But up to 2 digit only we have to find out. Approx 1. No, Rami, exactly approx 1, but here 4 option is given to you, so we have to find out. We have to give the correct answer. So which one we are getting, that will be equals to 0.98. Okay, so the option will be D. Is it clear? Shall we move to the next problem? Fine. Okay, so next problem is in a this time also in GATE 2022. This is also organized by the IIT Kharagpur. Okay, in GATE 2022, and this problem asked by the IIT Kharagpur only in 2015. So this problem is important. So the orthogonal turning of a mild steel tube with a tool of rake angle, that is 10 degree. Okay, alpha is given to you. Okay, is carried out at a speed of 0.14 mm per revolution. So this is f. Small f is given to you. Fine. This is 0.14 mm per revolution.
if the thickness of the chip is produced is 0.28, means the value of TC is given to you. Fine. The values of shear angle, that is phi, and shear strength will be, मतलब phi and epsilon हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो देखिए पहले अप्रोच 10 phi कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, दैट इज वी हैव ओनली वन फॉर्मूला हियर राइट नाउ, दैट इज r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha, ठीक है. Alpha, that is rectangle given to you, and r, that is chip thickness ratio, but that is not given to you, ठीक है. देखिए टर्निंग है, orthogonal turning है, so we can get the value of r, that is t by tc, and we can write this t as a f into sin lambda, ठीक है, upon tc, ठीक है. Now orthogonal है, so this lambda will be equals to 90 degree. f आपको feed है, feed आपको given है, tc आपको given है. You will get the value of r from here, put the value of r there, okay, and get the value of phi. So just go for it, okay. So just put the value, that is r. F is how much, that is 0.14 into sin lambda. Lambda is how much, that is 90 degree, upon tc. Tc is how much, 0.28. sin 90 तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है. sin 90 कितना हो जाएगा 1, and 0.14 upon 0.28 just twice है, तो how much you will get it from here, that is 0.50 or 1/2, ठीक है. So from here just put the value of r over here, okay. Alpha is already given to you, so this 10 phi will be equals to r cos of alpha, r that is 0.50 into, very good Soumya, this is 0.50 into cos of alpha. Alpha is how much, that is 10 degree, okay, 10 degree, upon 1 minus r, that is 0.50 into sin 10 degree, ठीक है. So just get the value of phi from here. Come on, tell me the value of phi, that is 28.33. Very good, Soumya. Very good. This is phi, you will get it from here, that is 28.33. Anybody else is getting the same value? Because I am getting the same, okay. I am also getting 28.33, but 28.33, देखिए कोई आंसर है नहीं 28.33 डिग्री. देखिए 28 डिग्री एंड 20 मिनट्स, 22 डिग्री एंड 20 मिनट्स, 37 डिग्री एंड 20 मिनट्स, एंड 24 डिग्री एंड 30 मिनट्स. देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा ट्रिक और नहीं दिया है, इसको थोड़ा सा और पजल कर सकते थे ये लोग. लाइक अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, लाइक 28 डिग्री तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है. नाउ 0.33 जो है, दैट इज 0.33 डिग्री, इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 28.33 डिग्री आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, ठीक है, इसको नहीं गिवन है. फाइन. तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना मिनट होता है आपका, ठीक है, 60 मिनट्स होता है, ठीक है. So just this is 0.33, that is 0.33 into 60. So how much you are getting from here? Tell me. 0.33 into 60. Uh, 19.8, right? 19.8 exactly. This is 19.8. बट देखिए इसमें 19.8 मिनट है अब ये, ठीक है. वेरी गुड वैभव. दिस इज 19.8, बट इसमें 19.8 मिनट गिवन नहीं है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज अप्रोक्सीमेटली आई एम कंसीडरिंग दैट इज अ 20. सो दिस इज 20 मिनट, राइट रवि, राइट 20. सो दिस विल बी 28 डिग्री एंड 20 मिनट्स. प्लीज कीप इन माइंड दिस वन, ओके. दिस इज द ऑप्शन ए, ये होना चाहिए.
देखिए 28 डिग्री इन 20 मिनट्स, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो हमें एप्सिलॉन की वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ से, बट स्टिल हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। So just get the value of epsilon, that is shear strain. So this will be equals to cot phi plus 10 phi minus alpha, ठीक है। So cot phi कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 upon 10 कर दीजिए, 1 upon 10 phi. 10 phi is how much? Phi is you have calculated, this is 28.33. देखिए उसको आप 28 डिग्री और 20 मिनट्स में मत रखिएगा क्योंकि आप जब कैलकुलेटर यूज करते हैं तो ऊपर आप उसको डिग्री में यूज करते हैं, ठीक है। मैं ठीक है, तो प्लीज कीप इन माइंड दैट थिंग। तो 28.33 ही यूज करिएगा इसको यहाँ पे, ठीक है। प्लस 10 phi minus alpha. Phi is 28.33 minus alpha is how much? Alpha is 10 degree. Okay, so this is 10. So get the value of epsilon from here. Point 614. No, Soumya. I'm not getting that. Please cross check that one. Yeah, right, Shadab. 2.186. Right. Soumya, please check the answer. 2.186 exactly. This is 2.186. So option will be like up to 2 digit we have to calculate. So this will be 2.19. 2.19. Okay. So right. Okay. Great, Vaibhav. Vaibhav always try to calculate the answer up to 3 digit or 4 digit. So generally क्या होता है कि जो हमारा numerical digit answer है उसमें भी up to 2 digit तक पूछा होता है. So exact value you will get. So this will be like 2.19. Fine. Let's move to the next problem. ठीक है, आसान है, तो कुछ नहीं करना था आपको, 10-5 फॉर्मूला पुट करना है और यहाँ पे भी फॉर्मूला ही पुट करना था आपको, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑर्थोगोनल टर्निंग, this is a good problem because asked by the IISc Bangalore. Orthogonal turning is performed on a cylindrical workpiece with shear strength of 250 megapascal, means tau is given to you, ठीक है। The following conditions are used. Okay, the cutting velocity is 180 meter per minute. So the value of V is given to you. There are three velocities, V, Vc, and Vs. So the cutting velocity is represented by the V. Vc is the chip velocity. Vs is the shear velocity. And this cutting velocity is horizontal in direction. So that is V. That is 180 meter per minute. Okay. So feed is 0.20 mm per revolution. So this is F is given to you. Fine. The depth of cut is 3 mm, means small d is given to you, that is 3 mm. Okay. The chip thickness ratio means small r is given to you, that is 0.50. Okay. The orthogonal rake angle is 7 degree, means the alpha is given to you. Apply Merchant's theory analysis. Fine. The shear angle and the shear force respectively are. तो देखिए पहले तो shear angle कैलकुलेट करते हैं, तो सेम अप्रोच, दैट इज tan phi इक्वल्स टू r cos of alpha अपॉन 1 minus r sin alpha। देखिए आज पूरी प्रॉब्लम्स जो है वो मेटल कटिंग पे है, तो tan ये जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए r इसमें भी r आपको डायरेक्टली गिवन है, अल्फा आपको डायरेक्टली गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, ठीक है। r is directly given, that is 0.50 into cos alpha is how much, that is 7 degree upon 1 minus 0.50 into sin 7 degree. Okay, so from here you can get the value of what I am getting is, okay, you can get the value of tan phi from here and then just tan inverse. Okay, so please calculate, come on, quick. Okay, great. Yeah, right. Okay.
So if you will calculate, this value will be equals to 0.5285, and from here you can just 10 inverse. So 5 value will be equals to, that is 27.85 degree. Very good, Soumya. Very good. So very good, Shadab. It's 27.855. Very good, very good. So the option will be, ठीक है, इसको approximately 28 consider कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 28 consider कर लेते हैं. Very good, विशाल, 27.85. देखिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर गिवन नहीं है, तो मतलब सॉरी, एग्जैक्ट आंसर गिवन नहीं है, अप्रोक्सीमेट गिवन है प्रॉब्लम में. सो द ऑप्शन विल बी 52, 52, 28, 28. सो ऑप्शन विल बी सी और डी, दोनों हो सकते हैं. तो दोनों हो सकते हैं. तो लास्ट टाइम तो हो गया था एक से, लेकिन इस बार दोनों करने पड़ेंगे, ठीक है. मतलब दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. आपको शेयर फोर्स भी फाइंड आउट करना है. नाउ शेयर फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के, दैट इज एफ एस इक्वल्स टू tau s, that is shear stress into shear cross sectional area. Now cross sectional area of what? Shearing action. Okay, shearing action means if देखिए इनिशियली क्या कर रहे थे हम लोग कि जो एक प्रॉब्लम हमने कंसीडर की थी शुरू में, दैट इज एमआरआर जब कैलकुलेट किया था फर्स्ट प्रॉब्लम में, तो उसमें दिस इज दैट वाज बी and this was T. Okay, that cross sectional area we were considering, but here we have to consider this tau s, that is shear stress, and this is the cross sectional area. But this cross sectional area is little bit different than that one. Okay, because for that we were moving toward this side. Okay, this is our this is a workpiece, and we are keeping this single point cutting tool like this, and we are moving toward this side. So this cross sectional area was coming in contact. But when we are talking about the shearing action, because if this is the plane, okay, this is the workpiece, and now this is the complete in contact. So like this is the shear area. So this complete cross section is coming in contact. So what will be the shear area here? Shear area will be equals to, if this is the B, okay, if this is the B, then this one, okay, this is the B, and this is the thickness. Okay, so this is the thickness. So this is what? This is tau s. So this cross sectional area we have to consider. Okay, so on this only there will be a frictional force Fs, and because of that only the shear stress is created on that plane. Okay, so this Fs will be equals to tau s into As. Now this As will be equals to what? B into Ts. Okay, this is tau s equals to B into Ts. Okay, now and we have already derived from, because there is one more relationship over here, we will get it. This is T, this blue color. Okay, this is T. Okay, this is uncut chip thickness, and this is phi. So we can get the value of T and Ts, means we can define the relationship, that is sin phi. Sin phi, this is perpendicular and this is hypotenuse. Okay, so sin phi equals to what? Lal batti ka means perpendicular, that is T by Ts. Okay, so from here you can get the value of Ts. Ts will be equals to T upon sin phi. Put the value of Ts over here. So this will be equals to tau s into B into T upon sin phi. Please keep in mind this formula. Either way, we have already derived this one. तो इसमें क्या क्या given है आपको, क्या नहीं given है, just get the value. Phi, this first tau s, that is shear stress. Okay, so this is 250 megapascal is given to you. B is the width. Width is not given. Okay, T is the uncut chip thickness, that is also not given. But the one more thing, this is not a simple orthogonal operation, this is a orthogonal turning. So orthogonal turning के केस में I have मतलब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था लास्ट प्रॉब्लम्स में, दैट इज अगर आपको D और T नहीं गिवन है तो F और D गिवन है क्या? F is feed and D is depth of cut. Obviously टर्निंग के केस में आपको B और T नहीं गिवन रहेगा, कभी भी आपको F feed और depth of cut ही गिवन रहेगा. ठीक है, तो अगर आपको F और D गिवन है तो जस्ट कन्वर्ट दिस, B को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ D, सो D अपॉन साइन लेम्डा. ठीक है, T को कन्वर्ट करेंगे F की टर्म में, दैट इज F इनटू साइन लेम्डा. दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे so this sin lambda will be cancel out and this B into T will be equals to F into D. Please keep in mind this one. Okay, आप यहाँ से करके भी देख सकते हो दोनों को. So just Fs will be equals to tau s, that is shear stress into F into D upon sin phi.
नाउ टाउ एस तो आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, फाई हमने कैलकुलेट कर ही लिया है यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए 28 रखना, 28.75 मत 85 मत रखना वैल्यू, ठीक है। सो जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर, दैट इज टाउ एस, दैट इज 250 मेगापास्कल इनटू एफ, फीड इज हाउ मच, दैट इज 0.20, ठीक है। डी आपका 3 mm, देखिए mm में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये मेगापास्कल में गिवन है। मेगापास्कल क्या होता है, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो mm स्क्वायर है, तो यहाँ पे अभी आप mm स्क्वायर रखिए तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आंसर विल बी इन न्यूटन, और न्यूटन में ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अपॉन साइन फाई, सो फाई इज 28। नाउ 28 क्यों रखवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 28 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही गिवन आपको, मतलब आंसर में गिवन है, ठीक है। सो जस्ट गेट द वैल्यू फ्रॉम हियर एंड टेल मी द आंसर। So you were 9.5. Very good. Please cross check this one. 319.5. Very good, Shanta. Very good, Soumya. This is 319.50. Okay. देखिए that will be in Newton. Please keep in mind the units. Okay. So देखिए यहाँ पे क्या है, हमें exact answer नहीं given है, approx given है. So this will be equals to 320. 320 Newton. So which option? Option will be, this is 400 Newton, this is 320. So the option will be D. Please keep in mind. Okay. So let's move. Okay, fine. Okay, so next is the like same problem. Data same है, आपको forces calculate करना है, इसमें problem different है but data same है, link data में था, ठीक है। Cutting and the frictional force respectively are, ठीक है। देखिए cutting force क्या होता है, FC, ठीक है, मैं यहाँ लिख के देता हूँ, that is FC। देखिए ये problem मैंने इसलिए ली है क्योंकि देखिए इसमें पहले भी आपको इतना कुछ नहीं करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम में भी और सेकंड में भी इतना कुछ नहीं करना है। ये प्रॉब्लम मैंने सिर्फ इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स हैज कंफ्यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम, दिस सेकंड वन, ओके, बिकॉज़ व्हाटएवर द आंसर दैट वी आर गेटिंग ऑफ FC and F, that is not exactly available in this problem, okay, so that's why I taken this problem. So okay, so FC कैलकुलेट करना है, तो FC कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। FC कैलकुलेट करने के लिए आपको देखिए इसमें FS आपने रिसेंटली कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मर्चेंट सर्कल डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा। दिस इज FC which is horizontal, ठीक है। This is perpendicular to FC, that is FT, okay, this is thrust force, okay, and from here this will be like R, this is resultant force, okay, R is the resultant force, ठीक है। Now in this direction at the shear plane, this angle, this is Fs, that is shear force, and this is phi, okay, so this is phi. Now देखिए आप इसमें नेक्स्ट आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, when you will take this perpendicular, so this will be phi, sorry, this is F, okay, and this is perpendicular to that, this is N, this is N, okay, and this is beta, this is beta, okay. This angle is how much, देखिए ये आपका वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना होता है टूल फेस का, दिस इज अल्फा, इफ दैट इज अल्फा देन दिस इज आल्सो अल्फा, ठीक है। दिस इज बीटा, देन दिस इज हाउ मच, दैट इज 90 माइनस बीटा, एंड दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, FC और F की। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि R की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ FS, FC एंड F, तो वो हमारे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर मैं S की वैल्यू को करता हूँ, सो दिस FS विल बी इक्वल्स टू, देखिए R ये वाला कंपोनेंट है, सो दिस विल बी लाइक हाउ मच एंगल बिटवीन देयर, दिस इज phi, दिस इज बीटा माइनस अल्फा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू R cos ऑफ phi प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज FC को इन टर्म्स ऑफ R लिखना है मुझे, सो दिस एंगल बिटवीन द FC एंड R, ठीक है। So this FC will be equals to R cos of beta minus alpha, ठीक है। F को लिखना है मुझे in terms of R, so this is the angle between these two, so this is R equals, sorry, F equals to R cos of 90 minus beta,
सो दिस विल बी आर साइन बीटा, ठीक है। नाउ देखिए आर सब में सेम है, मतलब रिजल्टेंट है, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जब आप इन दोनों को पुट करेंगे एक दूसरे में, लाइक आर विल बी इक्वल्स टू एफ एस अपॉन कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू आपका दिस इज एफ सी अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर एफ एस इज गिवन टू यू, ठीक है। फाई आपने कैलकुलेट किया है अभी, ठीक है, 28 डिग्री आपने कैलकुलेट किया है। बीटा आपको गिवन नहीं है, ठीक है। अल्फा आपको गिवन है, ठीक है, अल्फा आपको 7 डिग्री गिवन है, वेरी गुड। बीटा आपको गिवन नहीं है, तो आप यहां से एफसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अगर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो। बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मर्चेंट एनालिसिस यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि अप्लाई मर्चेंट थ्योरी फॉर एनालिसिस, ओके। सो अगर एनालिसिस करना है, सो जस्ट अप्लाई दिस relationship, that is 2 phi plus beta minus alpha, that is equals to 90 degree, okay. So this is 2 phi. Phi is how much? We will take, consider it 28 only, plus beta minus alpha is how much? That is 7 degree. So this is 90 degree. So please tell me the value of beta from here, how much? Come on guys, beta is how much? Tell me. I am getting it 41. Right, very good, very good, okay. This is 41, very good. This is 41 degree. I'm getting the same actually. Fine, very good Vishal, very good. So this is now beta is known. Just get the value of fc from here. So from here इधर लिख देता हूं मैं, fc will be equals to fs into cos beta minus alpha upon cos phi plus beta minus alpha, ठीक है। fs कितना है आपका, fs आपने कैलकुलेट किया है अभी रिसेंटली, दिस इज 320, ओके। सो जस्ट पुट द वैल्यू, दैट इज 320 into cos beta is how much, recently you have calculated, that is 41 degree, minus alpha is how much, 7 degree, upon cos phi, that is 28 plus 41 minus 7. So tell me the value of fc from here. $565, right? Everybody is getting the same, right? This is 565 Newton, okay. That is 0.08 है, but हमें approx आंसर फाइंड आउट करना है, so just 565 Newton. Everybody is getting the same, please check. Okay, so next is देखिए which will be the option, that is 568 here and 565B. So option will be B option, ठीक है। बट स्टिल हमें f की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो जस्ट क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्रॉस चेक करते हैं, देखिए क्रॉस चेक जब आप करेंगे तो यहां से इस फॉर्मूले से दिस फॉर्मूले से r की वैल्यू जो होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू f अपॉन साइन बीटा, ठीक है। नाउ हम ये रिलेशनशिप यूज करते हैं, सो दिस विल बी लाइक f विल बी इक्वल्स टू fs इनटू sin बीटा अपॉन cos phi प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। सो f will be equals to fs into sin beta upon cos phi plus beta minus alpha, ठीक है। fs की वैल्यू कितनी है आपने कैलकुलेट किया है, दैट इज हाउ मच, 320, okay. This is 320 into sin beta is how much, 41, okay, upon cos phi is how much, that is 28
plus beta, that is 41 minus 7. Okay, can you tell me the value of f from here? 447, right? 447.18, 447.18. Very good, Soumya. This is f value. Okay, so just cross check the answer that if that was the answer, like 565 आपका first FC answer आया. Now it should be like 381, but how much you are getting? You are getting that is 447. So let's take the other answer is available 356, 342 and 387. मीन्स देखिए अगर आप इसको रेंज को देखेंगे, अदर्स 447 इज नॉट 447 और 448 जो आंसर है, ठीक है, 447 या फिर 448, ये आपका सेकंड ऑप्शन कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है, मतलब चारों ऑप्शंस में, ठीक है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 300 ओनली. तो इसका मतलब क्या है कि व्हाटएवर द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग दैट इज नॉट ऑफ एफ. ओके, वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, बट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको गिवन है प्रॉब्लम आंसर, वो आपकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं है, वो कुछ और है. अब कुछ और कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि कुछ और कैलकुलेट करना है, या फिर मान लीजिए कि जैसे एफ के साथ हमेशा क्या आता है, एफ के साथ हमेशा हम लोग बात करेंगे तो एन की करेंगे, ठीक है, एफ सी के बाद हमेशा अगर हम साथ में बात करेंगे तो एफ टी की करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर फोर्सेस है भाई, ठीक है. तो अब अगर मान लीजिए कि मैं एफ की बात करता हूं कि लाइक पहले हमें फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना था, तो हम एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एन की वैल्यू को कैलकुलेट करता जब मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन होती, ठीक है, मतलब गिवन नहीं होती, मान लो कि वो वैल्यू हमने कैलकुलेट की होती, ठीक है, मतलब या फिर वो ऑप्शन में अवेलेबल होता तो मैं एन की वैल्यू को क्रॉस चेक करता. लेकिन हमने जो अभी रिसेंटली कैलकुलेटेड किया है दैट इज एफसी. एफसी इज ऑलरेडी गिवन एंड दैट इज 565 न्यूटन. तो आप क्या करिए कि यहाँ पे एफ टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए. तो जब एफ टी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ से आर की टर्म में अगर मैं लिखूं तो देखिए एफ सी अगर आर कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा है, तो एफ टी क्या हो जाएगा, दैट इज आर साइन बीटा माइनस अल्फा, बिकॉज एफ सी एंड एफ टी बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा, एफ टी की जो वैल्यू रहेगी, दिस एफ टी विल बी इक्वल्स टू एफ एस दैट इज into sin beta minus alpha upon cos phi plus beta minus alpha, ठीक है. तो fs that is 320 into sin beta, beta is how much, that is 41 minus alpha is how much, 7 degree upon cos 28 plus 41 minus 7 degree, ठीक है. So tell me the value of ft from here. Come on, be active. Come on, Vishal, Shadab, Vaibhav, you should also answer. 381, exactly, very good, very good. This is 381.15, right? This is in Newton. Okay, तो मैं इसको approximate अगर consider करूँ तो 380 consider कर सकता हूँ, या फिर 382 consider 81, sorry 381 या फिर 382 consider कर सकता हूँ. So that is 0.50 से कम है, तो 381 न्यूटन कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है. वेरी गुड विशाल. देखिए अब आप आंसर देखिए. सो द ऑप्शन विल बी बी दैट इज 381. इसका मतलब क्या है, वो बाय मिस्टेकन गलती हुआ है, वहां पे करेक्शन है थोड़ा सा. यहाँ पे एग्जैक्टली व्हाट ही वांट टू आस्क दैट इज द कटिंग एंड द थ्रस्ट फोर्सेस रिस्पेक्टिवली. ओके, तो प्लीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा उसको, ठीक है, गलत नहीं है. So let's move to the next problem. Is it clear to you? Okay. So next, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है. During the orthogonal machining, shear angle is 25 degree. Shear angle क्या होता है आपका, phi, ठीक है. Phi is given to you for minimum power consumption.
the ratio of thrust force to the cutting forces up to 2 value you have to find out. ठीक है, तो देखिए सॉरी अप टू 2 वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो देखिए आपको पूछा क्या गया है कि दिस इज Ft अपॉन थ्रस्ट फोर्स दैट इज Ft एंड Fc का रेशियो आपको पूछा गया है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या पूछा है इसमें और क्या बोला है कि फॉर द मिनिमम पावर कंजम्पशन। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, आपको सिर्फ फाई गिवन है। देखिए अगर मान लीजिए कि मुझे म्यू कैलकुलेट करना होता तो मैं tan बीटा लगा के बीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करके मैं म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता। वहां से क्या है कि मैं f बाई n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता। f बाई n क्यों फाइंड आउट क्यों मैं कर रहा हूँ, ये अप्रोच क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि f क्या होता है कि fc की टर्म में रहता है। ठीक है, fc साइन लेम्बडा प्लस ft cos ऑफ लेम्बडा, ठीक है, अपॉन fc cos ऑफ लेम्बडा माइनस ft साइन लेम्बडा। ठीक है, तो ये रहता है, तो यहाँ से आप fc बाई ft की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको अल्फा गिवन रहता, लेकिन अगर यहाँ पे आपको अल्फा भी गिवन नहीं, यहाँ सिर्फ आपको फाई गिवन है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच। ठीक है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, द अप्रोच शुड बी, देखिए देखिए बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये। रीजन ये है कि अभी तक कहीं पूछी नहीं गई है। ओके सॉरी, मैं क्यों बना रहा हूँ, आई हैव टू ड्रॉ द मर्चेंट सर्कल डायग्राम, सॉरी। Okay, so this is the Fc, which is cutting force. ठीक है, this is thrust force Ft। ठीक है, देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता ना चले एट द एंड के क्या करना है हमें, तो जो ग्राफ्स या फिर डायग्राम्स अगर आपके पास अवेलेबल है, स्पेशली मर्चेंट सर्कल डायग्राम का पास सारे सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम इस मर्चेंट सर्कल डायग्राम में है आपके। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेना, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज R, दिस इज R। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज बीटा माइनस अल्फा, दिस एंगल इज बीटा माइनस अल्फा। ओके, now if this angle is beta minus alpha, can we draw the relationship between Fc and Ft from here? Okay, so this is the, if this is the angle, then this is perpendicular and this is base। okay, and tan बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि लेंथ परपेंडिकुलर और बेस दिया है, सो दिस विल बी लाइक परपेंडिकुलर दैट इज Ft अपॉन बेस दैट इज Fc। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, Ft बाई AC, यही तो फाइंड आउट करना था हमें। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ से tan बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, लेकिन आपको बीटा माइनस अल्फा थोड़ी गिवन है, मतलब ना तो बीटा गिवन है ना ही अल्फा गिवन है, आपको तो फाई गिवन है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको, आपको एक कंडीशन गिवन है दैट इज मिनिमम पावर कंजम्पशन। और प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब हमने मर्चेंट सर्कल जो रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, ठीक है, मर्चेंट सर्कल डायग्राम करके जो रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी थ्रू द मर्चेंट थ्योरी, तो दैट वाज द फर्स्ट assumptions कि आपका जो कटिंग फोर्स है हम उसको मिनिमाइज करने के लिए ही ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। मिनिमम Fc को मिनिमाइज करने का मतलब क्या है, आपका टोटल पावर कंजम्पशन को आपको मिनिमाइज करना है। क्यों, क्योंकि टोटल पावर आपका क्या होता है, दैट इज Fc into V। Fc क्या है आपका कटिंग फोर्स, V क्या है आपकी कटिंग वेलोसिटी, ये आपका टोटल पावर कंजम्पशन होता है। और हम इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा जो फॉर्मूला मिलता है हमें, दैट इज फॉर फर्स्ट assumption दिस वन। ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, ये फॉर्मूला यूज करिए, फाई की वैल्यू रखिए 2 फाई इज हाउ मच, दैट इज 25 प्लस बीटा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप बीटा माइनस अल्फा की फाइंड आउट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाउ मच दिस बीटा माइनस अल्फा विल बी इक्वल्स टू, प्लीज टेल मी दैट। देखिए ऑनलाइन है, सो दैट्स व्हाई लाइक आई एम नॉट गिविंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज how would I know that how much of you are attempting this problem, at least using your critical thinking। okay, right Shadab, this is very good, 40। Soumya, please check, it's not 4, it's not 50, because this is like 2 into 25, right? okay, so this is 2 into 25, that is 50, and when you will send that 50 to that side, right hand side, so 90 minus 50, that is 40 degree। okay, so please keep in mind। okay, so this is beta minus alpha equals to 40 degree। ठीक है, so just put the value of over here, so
ft by fc equals to tan beta minus alpha. Beta minus alpha is how much? That is 40 degrees. So please tell me the value of this one. Up to 2 digit. Up to 2 digit. Okay. Right. Actually, Vishal, always try. I told you last time also. Up to 3 to 4 digit, you should try. Okay, it will be like 0.839. Okay, so if you will take up to two digit, we have to find out. So this will be like 0.84. Okay, so from next problem, you should find up to 3 digit. Okay, Webber, you too. So this will be like 0.84. Okay, so this will be the answer. फाइन। देखिए अभी तक इस तरह की प्रॉब्लम पूछी नहीं गई है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो कुछ नया है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Okay, so in ORS, tool angles are the inclination angle is 0 degree, means I value given आपको that is 0. Orthogonal rake angle, that is alpha is given to you, that is 10 degree, ठीक है। Cutting edge angle, that is lambda is 75, ठीक है, fine, ठीक है। Then the back rake angle is in degree how much, मतलब we have to calculate this value। देखिए अभी ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो रिलेशनशिप है, देखिए ये ORS सिस्टम है। अभी तक हम जितने भी प्रॉब्लम्स हमने की हैं वो ऐसे सिस्टम की थी, या फिर एक जो सेकंड प्रॉब्लम हमने की जिसमें रिलेशनशिप हमने डिराइव किया, उसमें ORS और ASA का कॉम्बिनेशन था। बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ ORS में आपको सारा डेटा गिवन है। आई हम लोग इंक्लिनेशन एंगल हम लोग ORS सिस्टम में कंसिडर करते हैं। अल्फा ऑर्थोगोनल रेक एंगल हम अल्फा एस और अल्फा बी कंसिडर करते हैं ऐसे सिस्टम में, बट ORS में हम अल्फा कंसिडर करते हैं, दैट इज द ऑर्थोगोनल रेक एंगल। प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल जो है लेब्डा, दैट इज 90 माइनस CS, वो भी हम ORS में ही कंसिडर करते हैं। और आपको जो पूछा गया है दैट इज अल्फा बी, वो भी हम ORS में ही कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारे डेटा जो है वो ORS का यूज करना है। अब ORS का किसे यूज करेंगे, ORS का हमने तो अभी कुछ पढ़ा नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको वापस थोड़ा पीछे ले चलता हूं, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे उसमें, ठीक है। इसमें जो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि इसमें आप सिर्फ देखिए कि रिलेशनशिप अल्फा आई लेम्बडा कहाँ गिवन है, ठीक है। अल्फा आई लेम्बडा और क्या है अल्फा बी मान लीजिए, ठीक है, अल्फा बी, क्योंकि हमें ये चारों गिवन है, ठीक है। तो अल्फा बी, देखिए अगर मैं थर्ड वाली रिलेशनशिप की बात करता हूं, ठीक है, तो अल्फा बी, ठीक है, आई इंक्लिनेशन लेम्बडा एंड अल्फा, तो अल्फा आपको गिवन है यहाँ पे, तो क्या मैं ये वाली रिलेशनशिप यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बैक रैक एंगल फाइंड आउट करना है। सॉरी, यहाँ पे भी कन्वर्जन है आपका, अल्फा बी जो है दैट इज इन ए से सिस्टम, राइट। तो अल्फा बी इक्वल्स टू 10i इंटू साइन लेम्बडा प्लस अल्फा 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 एस अल्फा बी एंड आई, ठीक है। आपको अल्फा बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दिस इज 10 अल्फा बी इक्वल्स टू साइन लेम्बडा और कोस लेम्बडा आप एज इट इज रख सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर दिस वी हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज 10i फर्स्ट, ठीक है, एंड दिस इज 10 लेम्बडा, सॉरी अल्फा, ठीक है। नाउ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज है तो प्लस, ठीक है। सो जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, ठीक है। So this is 10 alpha b will be equals to 10i. 10i is how much? 10i, that is 0 degree, ठीक है। Sin lambda, lambda is how much? That is 75 degree, ठीक है। Plus 10 lambda, sorry, 10 alpha. Alpha is how much? That is 10 degree, okay. Into cos lambda, lambda is how much? That is 75 degree, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी that is 10 0, ये वाली तो वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, because tan 0 is 0। तो you just have to find out this value only, okay। So यहाँ से 10 अल्फा बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ओके, यहाँ से आप अल्फा बी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो टेल मी द वैल्यू ऑफ अल्फा बी।
Yes, so right. Here most probably you will get this value, that is 0.0456, right? But tell me the value of this alpha b. Very good, Vishal. It's 2.613. Okay, that is in degree. But up to 2 digits, so it will be fine. 2.61. Right, right, right. Very good. Very good. So this is 2.61 degree. Okay, this is the alpha b. Okay, so this was the same problem like second one. Okay, so that is here also we have a conversion. So please keep in mind. Okay, let's move to the next problem. ठीक the consider थोड़ा सा ये मशीनिंग पे आ गया हूँ मैं. The following data pertaining to a typical surface grinding operation is given to you, where wheel diameter means देखिए इसमें ठीक है ग्राइंडिंग की बात हो रही है. सरफेस ग्राइंडिंग क्या होती है आपका कि there is a table, we are giving a feed to that. Okay, means like we are giving all three direction feeds like x direction, y direction, the z direction to it, and we are having this grinding wheel over there. Okay, so if we are taking this grinding wheel like this, okay, sorry. Okay, so this is like this is the center. Okay, and initially this is the depth of cut I am taking. Okay, this is the depth of cut. Okay, and this is the diameter or radius, sorry, d by 2. Okay, this is o, this is a, this is b, and just consider this is c. Okay, now अब डेटा चेक कर लेते हैं. ग्राइंडिंग की बात हो रही, so we are just considering this one. Wheel diameter is 220 mm. ये जो आपका d है, this is complete d is like d is given to you, that is 220 mm. ठीक है. Now cutting depth, this depth of cut, small d is given to you, this is 0.03 mm. ठीक है. Workpiece velocity means this workpiece we are giving the feed in this direction, or the velocity we are maintaining. So this velocity is like 380 mm per second. Okay, now generally इसको क्या है कि हम लोग feed से represent करते हैं. This feed is in capital F, जैसा milling में हम consider करते हैं, because in the milling also we are using the multi-point cutting tools, because a single point, single teeth of that tool itself is reducing large amount of the material. Okay, so that is the capital feed, capital F, that is the feed in mm per second. Grain velocity means grain velocity. Now grain is affiliated with the abrasive grains की बात हो रही है. So abrasive grains are affiliated with the wheel. Okay, so that is v. Okay, that is the chip velocity, that is 25 meter per second. So and 25,000 mm per second. Okay, fine. We have to find out the undeformed chip length. Undeformed chip length find out करनी है. So देखिए, when you will enter this when you will give the feed to this workpiece toward this side. Okay, this will be the like, because whatever the depth of cut we have given, that will come in, the surface area will come in contact, and that will remove the material. So this basically this is the length. Okay, this AC from here to here, this is we have to calculate. Okay, now how we can calculate this value? So if I'm just, because this is very little, so if I am assuming that it should be like a straight line, then this is A, this is B, and this is C. BC is how much? This is depth of cut, small d. Fine. This is small d. This is depth of cut. Can we get the we have to find out the value of AC. So can we get the value of AB? For AB आपको क्या करना पड़ेगा? This is AO आपको given है. This is d by 2. This OB will be equals to, this value will be equals to capital D by 2 minus small d. ठीक है? So you can get the value of AB from there. So देखिए AB square will be equals to OA square, that is the hypotenuse. ठीक है? Minus OB square, that is the perpendicular. ठीक है? तो OA क्या है आपका? D by 2 whole square minus OB क्या है आपका? That is d by 2 minus small d square. ठीक है? So this is d square by 4 minus, आप a minus b का whole square open करिए. ठीक है? So this will be like d square by 4 a square plus b square, so that is minus d square minus 2ab, so minus minus will be plus
2 into d by 2 into small d. So this will be cancelled out and this will be eliminated. Okay, so AB will be equals to, or AB square will be equals to d capital D minus into small d minus small d square. ठीक है, capital D minus small into small d minus capital D small d square. Okay, so this is the AB square. Now just put the from here also, this is 90 degree, so AC square, that is the hypotenuse square equals to AB square plus BC square. ठीक है, so AB square आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है, that is how much, capital D into small d minus small d square plus BC is how much, this is small d. Okay, so this is small d square, so this will be cancelled out. AC will be equals to root square capital D into small d, that is the value that you have to calculate. Okay, so this is AC. देखिए ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि मैंने ग्राइंडिंग पढ़ाते वक्त ये वाली टर्मिनोलॉजी करवाई नहीं थी आपको, ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई यूज दिस वन. सो जस्ट गेट द वैल्यू. आपको AC फाइंड आउट करना है, मींस अनडिफाइंड चिप लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो दैट विल बी रूट स्क्वायर कैपिटल D इनटू स्मॉल d. Okay, now capital D is what? Capital D is the diameter, wheel diameter, so that is 220. Okay, this is 220, and this is small d is how much, that is 0.03. so just get the value, calculate करिए value कितना आ रहा है, मैं भी calculate कर लेता हूँ. Two point 569. Very good, Shada. Right, it's 2 point. Right, I am also getting the same. That is 2.569. That will be in mm. Okay, please keep in mind because both are in mm. Right. Very good. 259. 2.569. Right. ओके, सो इट्स क्लियर टू यू, इजी है प्रॉब्लम. देखिए अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर इट, ठीक है, बट नहीं था, मैंने भी अगर वहां पे कराया नहीं था ग्राइंडिंग में, सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू डन दिस वन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. फाइन, सो द कैलकुलेट द शियर फोर्स, मतलब एफएस हमें फाइंड आउट करना है. For the following data in the metal cutting operation, the shear strength of the material, that is tau s, is given to you, that is 300 megapascal. ठीक है, cutting velocity, that is we always represented by the V, that is 4 meter per second, is given to you. Feed rate, that is 0.25 mm per revolution, so F is given to you. Fine. The depth of cut is 2.5 mm, that is small d, is given to you. Rake angle is alpha, that is 7 degrees, given to you. Resulting chip thickness ratio is small r, that is 0.50. सभी डेटा गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है. देखिए fs फाइंड आउट करना है. fs के लिए क्या होता है, that is fs will be equals to tau s, that is shear stress into cross sectional area. वैसे अभी ये कर भी चुके हैं हम लोग, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. tau s और as क्या होता है, that is b into t upon sin phi. बट आपका टर्निंग का केस है, तो जस्ट कन्वर्ट दिस tau s equals into f into t upon sin phi. ठीक है, सो जस्ट tau s भी आपको गिवन है, f भी आपको गिवन है, d भी आपको गिवन है, phi गिवन नहीं है. ओके, phi कैलकुलेट करना है. सो phi के लिए that is tan phi equals to r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha. ठीक है, तो जस्ट पुट करिए वैल्यू, that is tan phi equals to r, that is 0.50 into cos of alpha. Alpha is how much, that is 7 degree upon 1 minus 0.50 into sin 7 degree. ठीक है, so can you tell me the value of phi from here? Phi value, guys, come on, quick. Yeah, right. It's 27.855 almost. Right. We can also take 28, no issue. Okay, 27.85. Okay, that is degree.
That is in 5. Oh, sorry, that is 5. Okay, so just put the value of 5 over here and all other data. So tau s is how much? That is 300 megapascal. So this is 300. F is 0.250. ठीक है, D आपको डेफ. Okay, Shadab, you have calculated good, very good. D is how much? That is 2.5. Okay, upon sine 5, 5 is how much? That is 27.85 or 28 also you can consider. Okay, so from here tau s will be equals to, sorry, Fs will be equals to how much? Okay. Actually, Shadab, I am getting this is 401.49, but it's almost zero, almost same. Okay, very good. This is what I am getting is this is 401.49 Newton. 401.449 Newton. Yeah, very good, Samir. Very good. Very good. Okay. Okay. Shall we proceed? Now, this is the problem. Is this a simple problem? Okay. Okay. So let's move to the next one. Okay. This is the easiest problem. Fine. Using the Taylor's equation, Vt raised to n equals to C. Okay. Calculate the percentage increase in tool life when the cutting speed is reduced by 50%. देखिए टेलर्स टूल लाइफ हमने इक्वेशन कंसीडर किया है, दैट इज Vt रेज टू n इक्वल्स टू कांस्टेंट है. ठीक है. जब भी आपको दो मतलब कंपैरिजन करना हो तो दो कंडीशंस के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं. तो अगर आपको दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, दैट इज V1, तो जस्ट पुट द वैल्यू दैट इज V1 T1 रेज टू n इक्वल्स टू V2 T2 रेज टू n. ठीक है. नाउ n भी आपको गिवन है, दैट इज 0.50. C आपको गिवन है, दैट इज 400. ठीक है. What we have to find out, that calculate the percentage increase in tool life when the cutting speed is reduced by 50%. परसेंटेज फाइंड आउट करना है हमें. सेकंड कंडीशन में टू लाइफ कितनी होगी इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट, वो हमें नहीं कैलकुलेट करना है. ठीक है. हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है. एंड व्हाट इज द कंडीशन इज गिवन टू यू, दैट अगर हम फर्स्ट कंडीशन के लिए डेटा कटिंग स्पीड V1 कंसीडर करते हैं, टू लाइफ T1 कंसीडर करते हैं, तो फॉर द सेकंड कंडीशन जो होगी दैट विल बी V2 एंड T2. बट कंडीशन क्या गिवन है कि टू लाइफ परसेंटेज टू लाइफ हमें कैलकुलेट करना है व्हेन द कटिंग स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 50%. तो इसका मतलब V2 की वैल्यू कितनी हो जाए, पहले के कंपैरिजन में आधी हो जाए, हाफ हो जाए, मतलब V1 by 2 हो जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. तो V1 by 2 हो जाए, सो जस्ट पुट दिस वैल्यू ओवर हियर एंड फ्रॉम हियर दिस इक्वेशन, दिस इज V1 into T1 raised to n. n is how much? This is 0.50 equals to V2, that is V1 by 2 into T2 raised to 0.50. ठीक है. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज V1 in both the side, that will be cancel out. आप यहाँ से क्या करिए, दैट इज ये वाली जो टर्म है, दिस इज T1 raised to 0.50, उसको इधर ले आइए और ये जो 2 है इसको इधर ले जाइए. ठीक है. सो दिस विल बी लाइक T2 by T1 raised to 0.50 equals to 2. तो यहाँ से T2 by T1 की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 raised to 1 by 0.50. ठीक है. तो 1 by 0.50 कितना होता है, 1 by 0.50, that is 2, and that will be how much, 4. ओके. तो क्या ये आपका 400% हो जाएगा? Yeah, that's great. This is 4, right. But this is not the final answer. आपका 400% नहीं है. परसेंटेज चेंज क्या होता है, आपका परसेंटेज इंक्रीज इन टू लाइफ. सो परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है, दैट इज T2 minus T1 के मतलब चेंज कितना हुआ है अपॉन आपका इनिशियली कितना था. ठीक है. एंड परसेंटेज में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करिए 100 से. ठीक है. सो दिस फ्रॉम दिस T2 by T1 minus 1 into 100. ठीक है. So this will be 4 minus 1 into 100, so that will be equals to 300%. Okay, so this अगर आप 50% चेंज करते हैं, 50% रिड्यूस करते हैं टूल लाइफ को, so that will become the कटिंग स्पीड को 50% से रिड्यूस कर देते हैं, तो that time tool life will become 300%. Okay, very good Shadab and Soumya, right, very good. This is 300%. Okay, so is it clear to you? Shall we move forward?
Okay, fine. A turning operation is performed. Very good. Uh, a turning operation is performed in a lathe for turning a seamless tube of 28 mm diameter. Means the outside diameter is given to you, that is 28. Okay. The the cutting velocity of tool relative to the workpiece is 8 meter per minute. Okay, so V is given to you, that is 8 meter per minute. Okay, the tool rake angle is 12 degrees, so alpha is 12 degree. The depth of cut is small d, and that is given to you, that is 0.15 mm. Fine. The length of the chip is 50 mm, means LC is given to you. Okay, the velocity of chip relative to the workpiece is, okay, so this is like ओके, ठीक है। हमें चिप एक मिनट में बता देता हूँ यहाँ से पूरा। Okay, so this is the tool, okay, and this is your chip is moving in this direction, so this is VC. Now this VC is basically the what we have to find out the velocity of chip relative to the workpiece. ठीक है, now देखिए, अब ये आपको मान लीजिए कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, like this, it is moving in this direction. Okay, so the chip is coming in this direction, so chip is flowing over this tool. Okay, and that is coming out, and we are representing that with the VC. Okay, but this VC is not with this is not flowing over the workpiece, this is flowing over the tool. Please keep in mind. Okay, so this is the VC, that is a cutting velocity. What we have to find out, sorry, that is the chip velocity, but what we have to find out the velocity of chip relative to the workpiece. अगर आपका यहाँ पे टूल होता है relative to the tool, then we can say that is a VC. बट हमें यहाँ पे VC नहीं कैलकुलेट करना है, the velocity of chip relative to the workpiece. इसका मतलब क्या है, when this chip is coming out from this workpiece, there is a velocity, we call it as a shear velocity. तो हमें shear velocity कैलकुलेट करना है। पहले हम आइडिया क्लियर कर लेते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली विल अप्रोच। ओके, सो VS हमें कैलकुलेट करना है। अगर VS हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है कि लाइक हम ये यूज कर सकते हैं, दैट इज V अपॉन cos phi माइनस अल्फा, और VS हमें कैलकुलेट करना है, सो VS अपॉन cos ऑफ अल्फा। ठीक है, तो V हमें गिवन है, अल्फा दैट इज रेक एंगल वो हमें गिवन है, फाई हमें कैलकुलेट करना है, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ फाई। तो फाई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज tan phi इक्वल्स टू r cos ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा हमें गिवन है बट r हमें गिवन नहीं है। r हमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज r इक्वल टू t/tc से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपका टर्निंग है तो आपको अगर फीड गिवन है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज f इनटू sin लैम्डा, लेकिन हमें इस पूरी प्रॉब्लम में फीड भी गिवन नहीं है। ठीक है, और हमें टीसी भी गिवन नहीं है। ठीक है, बट हमें उसके अलावा क्या गिवन है, डेप्थ ऑफ कट और लेंथ ऑफ द चिप गिवन है। इसका मतलब जो एक रिलेशनशिप है, अदर रिलेशनशिप, दैट इज LC by L। ठीक है, LC दैट इज चिप लेंथ एंड L इज अनडिफॉर्म्ड चिप लेंथ। ओके, मतलब उससे पहले, डिफॉर्म होने से पहले। ठीक है, सो दिस इज L, तो LC हमें गिवन है दैट इज 50 mm, बट L हमें गिवन नहीं है। तो L हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपका अगर ये टर्निंग है, if this is okay, this is the diameter, okay, D. Now we have to calculate this value of L. Okay, so how we will calculate, देखिए undeformed chip का मतलब, देखिए deformed chip का मतलब क्या होता है, like when like the chip is coming out, okay, we can calculate the value of that length of that chip। Okay, so how we calculate that, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका एक सर्कल है, ठीक है, इनिशियली दिस हैज अ d डायमीटर। ठीक है, दिस इज द d डायमीटर। नाउ व्हेन यू विल ओपन इट, आई हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस चिप। ओके, देन इट विल बी लाइक दिस। ओके, ये आपका पूरा लेंथ हो जाएगा, एंड हाउ आई कैन कैलकुलेट दिस लेंथ, दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट इज अ पेरीमीटर।
that is the perimeter. So if d is the diameter, then perimeter will be equals to pi into d. Okay, so from here r will be equals to lc अपॉन जो L है आपका दैट इज पाई इंटू डी. नाउ पाई इंटू डी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम अनडिफॉर्म चिप की लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, अनडिफॉर्म मतलब कि आपका वर्क पीस ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले से जो उसका डायमीटर है वो कितना है, अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द, मतलब उतना ही वो स्प्रेड होगा, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उतना ही वो स्प्रेड होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस पाई इंटू डी. प्लीज कीप इन माइंड दिस वन. ओके, तो सबसे पहले r कैलकुलेट करिए, r की वैल्यू को यहां पे रखिए, देन गेट द वैल्यू ऑफ phi, put the value over here, then get the value of vs. Okay, so the approach is clear, so let's move. r will be equals to lc by pi into d. ठीक है, lc is what, lc is 50 upon pi into d. d is how much, that is 28. Okay, so tell me the value of r from here. This is 14. Right, it's 0.568. 0.568. Very good. Okay, very good, Shadab, very good. So can you tell me the value of 10 phi as well along with that? That is 10 phi will be equals to r cos of alpha, that is very good, Vishal, this is 0.568 into cos of alpha. Alpha is given to you, that is 12 degree. ठीक है, upon 1 minus 0.568 into sine 12 degree. ठीक है, so okay, just get the value of phi directly from here. How much the value of phi? Shanda, please correct, please at least एक बार once just check this one. Please check again because I am getting little bit difference. Yeah, actually right, I am getting approximately 33 degree. Shadav, you please check that one. Okay, this is nearby I am getting this 33 degree. Okay, so this is the 10. Yeah, this is exactly that exact value that I am getting, 32.21. Very good, Vishal. Okay, so this is 32.21. So whatever the value that you are getting, on the basis of that only we are taking this 33. Okay, just take the 33 value and get the value of vs. So from here, right, vs will be equals to v into cos of alpha upon cos phi minus alpha. ठीक है, so v की वैल्यू क्या है आपका, v is directly given to you, that is 8 meter per minute. ठीक है, और आपको यहाँ पे vs भी किस में कैलकुलेट करना है, that is in meter per minute only. ठीक है, so this will be 8 into cos of alpha. Alpha is how much, that is 12 degree upon cos phi. Phi is how much, that is 33 minus 12. So from here you can get the value of vs. So please tell me the value of vs. Yeah, great. 8.381, right. What others are getting? 8.381, right. 8.381. What is the unit? That is in meter per minute, because we are using this v in meter per minute only. Okay, we are writing this one meter per minute. Okay, very good, Shadab. This is vs. Okay, so this will be the आंसर. ठीक है, देखिए प्लीज आप टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना. आप कोई भी प्रॉब्लम करो सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना कि आपको पूछा क्या जा रहा है. ठीक है, जनरली क्या होता है कि आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे कि लाइक वेलोसिटी ऑफ चिप. ओके, आप जनरली स्टूडेंट सिर्फ इसी पे ध्यान देते हैं, फ्लो में कुछ नहीं देखते बाकी सब कुछ. तो अगर मान लीजिए कि मैं पहले आपको VC कैलकुलेट करा देता और जो आंसर आप व्हाट एवर द आंसर दैट यू आर गेटिंग वो गलत हो जाता है. राइट, ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करिए कि अप्रोच लगाने से पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें कैलकुलेट करना क्या है. ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड दिस वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Okay, so in
a cutting operation performed by shaper to complete shaper machine का problem है, ठीक है, to complete one cut on a plate of 600 and 900 mm square, ठीक है, एक काम करते हैं, this is 600, ठीक है, and this is 900, ठीक है, this plate is given to you and the cutting speed is where is this? Okay, this cutting speed is 5 meter per minute, okay. The return to cutting ratio, time ratio, देखिए we generally represent this quick return ratio by small m, and that is equals to 1 by 4, okay, means how much time required in the cutting stroke upon how much sorry, during the return stroke and how much time taken during the cutting stroke, okay. So that is 1 by 4 and that is equal to 0.25, ठीक है. Feed is that is 2 mm per stroke, so this is feed is 2 mm per stroke, okay. Now the clearance at the each like end, that is 75 mm, means clearance जो होता है that is हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं इधर से मूव कर रहा हूँ, ठीक है, like for an example like if I'm taking or my keeping my single point cutting tool over here and I'm moving in this direction, ठीक है, then I will have to reach over here, ठीक है. तो मान लीजिए कि ये जो इनिशियली यहाँ से अगर स्टार्ट किया, so this is approach and this is over travel, ठीक है, this is over travel plus this is length, fine. तो हम ऐसे ही मूव करें 600 की डायरेक्शन में, ठीक है. सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कट, सो टाइम कैसे मेजरमेंट करते हैं हम लोग, दैट इज टाइम फॉर द मशीनिंग, दैट विल बी इक्वल्स टू L into 1 plus m upon the velocity, okay, into number of stroke, okay, into number of stroke. So number of stroke कैसे कैलकुलेट करते हैं कि number of stroke will depend that how much amount of the material is removed in per stroke, okay. तो per stroke मान लीजिए कि यहाँ पर आपका single point cutting tool है, when you will come move in this direction and come back, okay, so 1 means 2 mm is removed in that direction, okay. So now again you have to bring this workpiece over here, मतलब देखिए tool वहीं पे रहेगा, ठीक है, tool आपका वहीं रहेगा, you have to give the feed to the workpiece, okay. So now again there in the second there will be 2 mm, third there will be 2 mm, fourth there will be 2 mm, like that, okay. So this number of stroke is given as how much width is there, that is how much width is there upon what is the feet per stroke, okay. So this will give you the number of stroke, okay. So from here get the value of this length is given to you, we are considering this 600, okay. M is given to you, V is given to you, velocity, okay, velocity is also given, so just get the value of T, that is L, that is how much, that is 600 mm. देखिए L सिर्फ आपको L ही नहीं कंसीडर करना है, यहाँ पे बोला है कि आपको अप्रोच और ओवर ट्रैवल भी कंसीडर करना है, सो जस्ट राइट अप्रोच दैट इज 75 प्लस ओवर ट्रैवल दैट इज आल्सो 75, ठीक है, इनटू 1 प्लस m दैट इज 0.40, ठीक है, अपॉन v इज हाउ मच. देखिए आप सभी की वैल्यू को सारी लेंथ और ये सारी वैल्यू आप mm में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दिस स्पीड इज गिवन टू यू इन मीटर पर मिनट, ओके. सो जस्ट कीप दिस इन mm, so that will be 10 raised to power 3 mm per minute, क्योंकि हमें मिनट में ही कैलकुलेट करना, तो सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो फ्रॉम हियर width is how much, now in this case width will be 900, ठीक है, upon f is how much, that is feed, okay, feed is that is 2 mm per stroke, okay. So just get the value from here. T, can you tell me the value of T from here? No, Somranjan, actually, I'm getting something different. Like I'm getting 78.75. Please check, or let me wait for the other answers. And so, please, you should also check. Like if it's 70.2, then it's okay. Then I have to check, cross check my answer.
Yeah, Shadab, M is 0.25 only because that is 1 by 4, na? That is 1 by 4, so that is 0.25. Vishal, that's right. Yeah, 78.75. So, may please check. I am also getting that is 7.78.75. Okay, that is in minutes. I am also getting this answer. You please check, Swami. No, no. Sorry. Let me check. This is 600 plus 75 plus 75 into 1.4 divided by 5000 into 900 by 2. No, I'm Vishal, can you tell me that while keeping this value, while keeping this 600, you are getting this answer? So may you also, like if you are getting this answer 78.75. So when you are getting this answer, while placing 600 or 900? Sorry, it's yes, Shadab, right? This is 0.25. Sorry, एक्चुअली ये है कि इसमें ऑनलाइन में थोड़ा यही प्रॉब्लम है कि आप जो कहना चाहते हो मैं आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाता हूँ. Yeah, this is here we have to keep this value, that is 0.25. Please keep in mind. Okay, so the answer will be changed here. Okay, now this is 600 plus 75 plus 75 into 1.25. Yes, I'm right. However, please check the answer. Please check the answer. This is 600 plus 75 plus 75 into 1.25 divided by 5000 into 900 by 2. So yeah, right. I am also getting the 84.375. That is in minutes. Okay, right. Very good. 84.375 minutes. Yeah, everybody is getting 70.3. Uh, Vishal, we are coming to that answer, but please check that one, Vishal. When you are writing over here that 600 plus here this is 1.2 1.25. That time, how much answer you are getting? Please cross check that. We two people are getting this answer. That is 84.375 minutes. Very good, Swami. So now it's clear that when you will calculate this, when you will keep this 600 over here, so you that answer will be 84.375. But guys, please listen that we cannot say that this is the correct answer. Okay, we cannot say this is the correct answer. Why? Because देखिए आप आपका ये अगर प्लेट है, this is 600 and this is 900, ठीक है? तो आप दोनों तरह से मशीनिंग कर सकते हैं. आप इस तरह से भी मशीनिंग कर सकते हैं, आप इस तरह से भी मशीनिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी जो हमने किया है दैट इज ये 600 है आपका, दिस इज 900. तो हमने अभी इस तरह से मशीनिंग किया है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस तरह से मशीनिंग करना है, मतलब उसमें हमें आंसर क्रॉस चेक करना है. वेरी गुड विशाल, 84.375 राइट. बट ये आंसर फाइनल है या नहीं है, या फिर करेक्ट है या नहीं है, ये हमें नहीं पता. बिकॉज क्या होता है, देखिए शेपर मशीन जो है, shaper machine is a kind of like wastage of time. ठीक है, but still if we are performing any operation on the shaper machine, then we really want that it should conserve less time. Okay, तो अब हमने अभी जो हमने किया है, like we were keeping the single point cutting tool over here. Okay, over here and we are moving in this direction. एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को रख लेते हैं. वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो अब लेंथ क्या होगी, 900 हो जाएगी. पहले 600 थी, अब पहले विड्थ क्या थी, 900 थी, अब जो विड्थ है वो 600 हो जाएगी. ठीक है, नाउ यू वी आर कीपिंग दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ओवर हियर. वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. देयर विल बी अ over travel we are taking. Again the tool is coming over here and we are giving this 2 mm per stroke in this direction. Okay, so now this time we have to find out the answer. So please
please cross check this one. Okay, if this will be the less answer, then this will be the final answer. Okay, so this time will be equals to L. Sorry, L is how much? That is 900. This is 900 plus 75 plus 75 into 1 plus 0.25. So that, can I directly write that is 1.25 upon 5000, okay, into now it is 600 by 2. So can you tell me the answer, what answer you are getting from here? Right, right, both are right. 78.75, very good. 78.75 minutes. Okay, now very good Vishal. 78.75. Now which answer we have to consider, second one or the first one? ठीक है, 78.75, very good. We have to consider this second answer. Why? Because in this we will take this will consume the less time. Okay, and शेपर जैसा कि मैंने बोला कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, बट स्टिल अगर वेस्टेज ऑफ टाइम है तो उसमें कितना टाइम हम लोग कंसिडर कम कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ when you will use this one 900 as a length, okay, then you will get the less time. So इसमें एक बात ध्यान रखने वाली, ये मैंने क्यों करवाया, इसको मैं डायरेक्ट अगर करवाता तो लाइक बी और डी एल ऐसे कराते तो हम समझ नहीं पाते इस प्रॉब्लम को. तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि इसमें लेंथ और आपको विड्थ अगर दिया है, लेंथ और विड्थ अगर आपको दिया है, तो यू ऑलवेज ट्राई टू कवर, ऑलवेज ट्राई टू टेक दिस लेंथ फॉर योर ट्रैवल ऑपरेशन. ओके, मतलब जिसमें आपका मटेरियल रिमूव करना है, जिसमें आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा. ठीक है, सो दैट विल गिव यू द लेस टाइम. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. This is a wonderful problem. Okay, a through hole of diameter 30 mm has to be drilled in a lathe in a rectangular plate of size 500, 400 and 50 mm. So again this is 500. If this is 500, then 5, this is 400, this is 500. थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए. Okay, so this will be like this is 50. Okay, so this is like top view. Okay, this is top view and this is 500. ठीक है, ये आपका 400 है. जब आप इसको साइड व्यू देखेंगे, so this will be the side view. So this is 50 and this is 500. Fine. Now तो बेसिकली क्या है कि आपका ये एक प्लेट है एंड दिस यू हैव टू फिक्स इट ऑन अ lathe chuck, because now the drilling is basically happening on the lathe machine. तो lathe machine में जब ड्रिल होती है तो देखिए यूजुअली ड्रिलिंग में होता क्या है कि ड्रिल बिट रोटेट करता है. दिस ड्रिल, इफ दिस इज द ड्रिल बिट एंड दिस इज रोटेटिंग एंड दिस वी आर गिविंग अ फीड towards the workpiece, okay, towards the workpiece, so that will remove the material. But lathe पे जब ड्रिल करते हैं तो क्या होता है कि this drill bit is mounted on the dead center. Okay, मतलब जो हमारा टेल स्ट्रोक होता है उस पर माउंट करते हैं. So टेल स्ट्रोक जो है that cannot rotate. So this is stationary, means we are just giving a feed to that horizontal feed, मतलब reciprocating feed, and the plate is mounted on a chuck. Okay, this plate is mounted on a chuck, so that will basically rotate. Okay, and again if it is a rectangular plate, then we will mount it on a 4-jar chuck, not on the 3-jar chuck. Please, ये कड़ियां हैं, so we have to keep in mind. Now rectangular plate of size this, drill of diameters 10 mm, 20 mm and the 30 mm are available. देखिए ड्रिल आर अवेलेबल, इसका मतलब क्या है कि ड्रिल बिट अवेलेबल है. ठीक है, मतलब ड्रिल बिट है तो आपके पास 10 mm का भी अवेलेबल है, 20 mm का भी है और 30 mm का भी है. प्लीज कीप इन माइंड. ओके, assuming that cutting speed is 10 meter per minute, so the V is given to you, that is 10 meter per minute. Okay, the feed for the drill is 0.20 mm per revolution, so F is given to you. Calculate the drill time. Okay, टाइम हमें कैलकुलेट करना है और मशीनिंग टाइम वी कैन से वी हैव टू कैलकुलेट.
अप्रोच एंड द ओवर ट्रैवल, नेग्लेक्ट अप्रोच एंड ओवर ट्रैवल, ठीक है हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैक्सिमम मटेरियल कट एट अ टाइम कैन नॉट एक्सीड 10 mm। इसका मतलब क्या है कि एट अ टाइम जब आप ड्रिल करोगे, ठीक है, तो जब ड्रिल कर रहे हो आप तो उस टाइम पे 10 mm डायमीटर से बड़ा एनलार्ज नहीं कर सकते। मतलब आपको ड्रिल कितना करना है, थ्रू होल ऑफ 30 mm डायमीटर हैज टू बी ड्रिल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको ये जो प्लेट है इसमें हमें एक 30 mm का प्लीज कीप इन माइंड दिस इज 30 mm, दिस इज 30 mm हमें यहाँ पे थ्रू होल करना है। थ्रू होल का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट दी थिकनेस, ओके, तो ये हमें होल करना है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमें होल करना है दैट इज ऑफ 10 mm, ठीक है। तो उसके लिए क्या, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सीड देन द 10 mm, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 10 mm का ड्रिल यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना है। अगेन हम 10 mm कर सकते हैं तो उसके लिए हमें 20 mm यूज करना पड़ेगा। अगेन हम 10 कर सकते हैं, उसके लिए हमें 30 mm का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब 10 mm रिमूव हो गया तो कि लाइक अगेन वी आर रिमूविंग दैट मटेरियल। हमें वो ऑपरेशन जो लाइक जैसे 10 mm हो चुका है, अगर हम बड़ा ड्रिल यूज कर रहे हैं तो नाउ ये तो ड्रिल ऑलरेडी है, नाउ दैट विल कम इन कांटेक्ट, बट इसमें कंडीशन है कि आप 10 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, सो वी हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस, ओके। नाउ टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट जो टाइमिंग होगा दैट विल बी व्हेन यू आर यूजिंग दिस 10 mm ड्रिल बिट। सेकंड जो टाइम होगा दैट विल बी व्हेन यू आर यूजिंग दिस 20 mm। थर्ड टाइम जो होगा दैट व्हेन यू आर यूजिंग दिस 30 mm। एक और चीज है कि अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे, सो दिस हॉरिजॉन्टली इट विल लुक्स लाइक दिस इज 50, ठीक है। आपको लेंथ, आपको सिर्फ डेप्थ ऑफ कट देखना है एंड दिस इज योर ड्रिल बिट। Sorry, okay, this is your drill bit. So if this is the diameter, so this is diameter will vary, like first में आपका d1 जो है that will be like 10 होगा, सेकंड केस में आपका d2 20 होगा, थर्ड केस में आपका d3 कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। so this please keep in mind this one, fine। now total length will be equals to, जब आप फर्स्ट टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, सेकंड टाइम कैलकुलेट करोगे, थर्ड टाइम कैलकुलेट करोगे, सो टाइम बेसिकली गिवन कैसे होता है, दैट इज L by F into N, L by F into N। L is the total length travel, F is the feet and N is the rotational speed। तो feet आपको given है, okay, that is speed is given to us। N हमें rotational speed given नहीं है, but V given है, that is the velocity, and velocity is affiliated with the drill bit, okay। So this is equal to pi into D into N। तो यहाँ से आप N कैलकुलेट कर सकते हो, so N will be equals to V upon pi into D। देखिए V तो सेम है लेकिन डायमीटर चेंज हो रहे हैं आपके, प्लीज कीप इन माइंड दैट वन एज वेल, ओके। नाउ L क्या है, आपका टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ कितना है, दिस इज 50, सो नॉट ओनली दिस विल बी 50, आपको ये वाली लेंथ भी कवर करनी है, ठीक है, दिस लेंथ। एंड ये लेंथ कितनी होती है आपकी, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस वन इन द प्रॉब्लम्स, दैट इज 2 by 10 अल्फा। अल्फा इज व्हाट, दैट इज, और बीटा लिख लीजिए, सॉरी बीटा लिखा था मैंने, सो 2 बीटा इज बेसिकली द पॉइंट एंगल एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर नहीं गिवन है सो वी विल कंसीडर दैट स्टैंडर्ड वैल्यू and this will be equals to 118 degree and that beta will be equals to now 59 degree, ठीक है, please keep in mind। so this L will be equals to how much thickness plus d by 2 into sin beta, okay। so first उधर ले लेते हैं आप लोग, next first this is Tm T1 plus T2 plus T3, ठीक है। This is T1, T1 is L is 50 mm, आपका thickness जो है 50 है। Now D1 इनिशियली आप कितना ड्रिल बिट ले रहे हो, that is 10 mm upon 2 into 10 beta, beta is how much, 10 59 degree, ठीक है, upon F, F is how much, F is given to you, that is 0.20 into V, okay, this is into V by pi D, okay। so this is like this T will be equals to L into pi into D upon F into V। so V is how much, that is 10 meter per minute, so can I write convert into the mm, okay। so that will be 10 into 10 raised to power 3, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है आप mm में ही कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, into pi into D, that is how much, D1 that is 10,
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइम हुआ, दैट इज T1। ठीक है, जब आप 10 mm का ड्रिल बिट यूज करेंगे, दैट टाइम, that is the time, okay, drill bit. Now when you will use the 20 mm drill bit, so that time will be equals to again 50 plus diameter will be 22 into 10 alpha, sorry, beta, that is 59 degree upon 2, 0.20, because feet will be same. Okay, this is the cutting speed will be same, 10 into 10 to the power 3 into pi into d. D is how much? That is 20. Okay, so this is 20. Okay, this is second time. Now the third time will be equals to again 50 plus diameter kitna hai? This is third, 30, so upon 2 into 10, 59 degree. Okay, this is total length into pi into d. D is how much? This is 30 now, upon 0.20 into 10 into 10 raised to power 3. ठीक है, देखिए थोड़ा लेंदी है बट बहुत ही आसान है। ठीक है, so from here you will get the value of Tm. Okay, so please calculate and tell me overall Tm value. Okay, come on. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टाइम लग सकता है। Yeah, 5.3625. I need one more answer to cross check this one. That will be in minutes, okay? Because that V that we are using, V is given to you, that is 10 meter per minute. Okay, तो मीटर को तो हमने 10 raised to power 3 से मल्टीप्लाई करके 10 mm में कन्वर्ट कर लिया था. Now the remaining thing that will be in minutes. So whatever the answer you will get, that will be in minutes. Okay, very good. Can anyone else other can tell me the answer? Is TM? Otherwise, I'm also getting the same value. So this is 5.3625. Shall we proceed? Okay, let's move. Okay, so next problem is when milling a shaft of 20 mm wide, okay, and 10 centimeter long with a okay, this condition is given to you for a shaft, okay. A rectangular plate of 10 centimeter and 20 centimeter, okay. If the cutting conditions are like cutting speed, milling का problem है, ठीक है. So cutting speed is V is given to you, that is 60 meter per minute. Diameter of the end mill किस तरह के cutters होते हैं, like this is the vertical, like a drill, how the drill bit is, okay. So this is the vertical mill, okay, and that is mounted in a
billet. Okay, so this is diameter, that is D is given to you. The number of fluid teeth, so the Z value of Z is given to you, that how many teeth are there on a milling cutter. Feed is feed is 0.01 mm per tooth. Okay, so the small f value is given to you. Okay, now depth of cut is 3 mm. Then the milling cutter feed rate. Okay, so that milling cutter feed rate हम किस तरह से represent करते हैं, that is capital F, that is a milling cutter feed rate. Okay, and that is represented by F into Z into N. Okay, now F is the feed, but that is in per tooth. Okay, and Z is the number of teeth, that how many teeth are there, and N is the rotational speed. So rotational speed is not given to you, but velocity of the tool is given to you, that is pi into D into N. So N की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए. So that will be equals to V upon pi into D. ठीक है, so this will be equals to F into Z, that is Z is given to you, V upon pi into D. ठीक है, देखिए आपको F given है, Z given है, V given है, D given है. So just get the value, put the value and get the answer. F is how much, that is 0.01, and Z is how much, that is 8, V is how much, that is 60. Okay, देखिए आपको आंसर mm पर मिनट में पूछा है, और सो यहाँ पे आपको 60 मीटर पर मिनट गिवन है. सो जस्ट आई एम कन्वर्टिंग दैट इनटू mm पर मिनट. सो दैट इज 10⁻³ अपॉन पाई इनटू d. d is how much, that is 20 mm. Okay, so can you tell me the value of capital F from here? Come on guys, it's simple. It's yeah, exactly, it's 76.39. very good, Swami. This is 76. Shadab, please check this answer, because this is not I'm also getting the same basically. So 76.39 mm per minute. mm per minute. Very good, Shadab, very good. This is the bed F. Okay, that is in feed rate. Okay, देखिए that time I जब हमने milling में पढ़ाया discuss किया था, that time I told you that there are two types of the feed. Cutting velocity हम consider करते हैं, but cutting velocity in all the machining tool is affiliated with the tool only. Okay, milling cutter. Okay, Shadab. fine. So देखिए milling cutter जो consider in all the machining operations, the cutting speed is affiliated with the milling cutter only. Okay, चाहे tool है, कोई भी tool हो आपका, उसी से affiliated रहेगा cutting speed. Now the feed we are providing, तो जब आप workpiece को feed देते हैं toward this side, as the tool is rotating over here, so that is the feed. Okay, now यहाँ पे क्या था, milling में दो तरह की feeds थी. पहली feed के that is mm per minute और mm per tooth. तो उसका mm per tooth का मतलब क्या है, like for an example there are like 4 teeth are there on a milling cutter. So when if this is moving in this direction, then every teeth will come in contact with this workpiece multiple times, जब तक आपकी ये लेंथ कवर होगी. ठीक है, multiple times. तो हम क्या कहते हैं कि बेसिकली जिस तरह से हमने शेपर में क्या किया कि mm पर स्ट्रोक लिया है, कि एक स्ट्रोक में आपका कितना अमाउंट ऑफ द मटेरियल रिमूव होगा. ठीक है, उसी तरह से क्या होगा कि ये जो है दिस इज 0.01 mm पर टूथ. इसका मतलब है कि आपका एक टीथ जो है वो 0.01 mm मटेरियल रिमूव करेगा वर्क पीस से. ठीक है, सो हाउ मेनी टूथ्स आर देयर, दैट विल गिव यू द टोटल फीड. ओके, दैट विल रिमूव द टोटल मटेरियल. नाउ ये जो फीड है, दिस फीड इज एफिलिएटेड, जो हमने कैलकुलेट किया, दिस फीड इज एफिलिएटेड विद द motion of the workpiece. Now again, this is a milling machine, this is rotating, tool is rotating, and that is a fixed. Okay, that cannot reciprocate, so we are reciprocating the feed table only, means workpiece. So now we are giving a feed. Okay, this is not the cutting speed. ठीक है, please ध्यान रखिएगा इसको. Okay, let's move to the next one. This is a wonderful problem, and this is the combination of thermodynamics and the machining operation. A workpiece of 30 centimeter diameter, means D is given to you, is being turned on a lathe, and tangential force on the
कटिंग इस टूल इज एस्टिमेटेड टू बी 100 न्यूटन। देखिए टर्निंग की बात हो रही है, और टर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि जो एफ जेड होता है दैट इज अ मेन टेंजेंशियल फोर्स, जब आप उसको ऑर्थोगोनल कटिंग में कंसिडर करते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ सी। ओके, मींस ये जो आपका टेंजेंशियल फोर्स है दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एफ सी दैट इज 100 न्यूटन, मींस मेन कटिंग फोर्स। ओके, when the turning operation is executed for 10 minutes, मतलब आपको that is time is given to you, that's for the 10 minute, the increase in internal energy of the workpiece uh, work out to be 125 kilojoule. Okay, if the workpiece stand at 180 revolution per minute means rpm, then the heat transfer from the workpiece is, ठीक है। देखिए सिंपल सा है कि आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करना है, दैट इज डेल क्यू। ठीक है, बिकॉज दैट इज अ पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन और ये क्या होता है वो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, दैट इज वी राइट इट बाय द डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, दोनों पाथ फंक्शन इसलिए डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं जैसे मैंने बोला कि ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, एंड दिस चेंज इन और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज गिवन dq is the heat transfer, change in internal energy and the work done by the system. Okay, now here du is given to you, that is 125 kilojoule, because that is the internal energy. ठीक है, change in internal energy increase हो चाहे decrease हो, that depends, sorry, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो दैट डिपेंड्स कि आपको गिवन क्या है। ठीक है, सो चेंज इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सो दैट इज प्लस 125 किलो जूल। ठीक है, नाउ आपको क्या है कि ये फाइंड आउट करना है, सो फॉर दैट वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए अब मशीनिंग में वर्क डन कैसे फाइंड आउट करना है, मशीनिंग में वर्क डन क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, हम एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इक्वल्स टू एफ सी इंटू वी, बट एफ सी इंटू वी क्या है, आपका टोटल पावर कंजम्पशन है, आपका एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, सो एनर्जी मींस वर्क डन, मींस हाउ मच अमाउंट ऑफ द पावर, मींस एनर्जी इज व्हाट, how much amount of the energy is dissipated per unit time, that is a power. Okay, so just multiply with the time, means how much time we are operating this means on the lathe machine. Okay, so fc is given to you, that is 100 newton, so this is 100 newton into v. V is the cutting speed, but cutting speed is not given, pi into d into n is given, pi into d into n is given to you. Okay, this is into time. Okay, so this is like 100 into pi into d, d is how much, that is 30 सेंटीमीटर। देखिए आपको ओवरऑल वॉट में ही कैलकुलेट करना है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी लाइक 10⁻²। ठीक है, इनटू n, n इज हाउ मच, दैट इज 180 आरपीएम। देखिए वॉट में गिवन है तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट विल बी लाइक डिवाइड बाय 60। ठीक है, फाइन। Okay, and from here like 10 minutes तक work कर रहा है, so how much seconds are there, that is 60. Fine, so just calculate the value of E from here. Can you tell me the value of E from here, students? Actually, whatever the data that we will get it over here, right, Soumya? Very good. Very good. 169,646. I'm getting the same value. Okay. Shadab and Vishal, you should also check. Right, very good. But whatever that value that you are getting, that is 169,646. That will be in joule. Why it is in joule? Okay. Right. Very good. Google.
that is in joule. Why it is in joule? Because like that is in Newton, that is in Newton. Here, whatever you have calculated, that you have converted that into meter, okay, and that is in per second. So this is meter per second, and time that was in 10 minutes. So again, that also you have converted into second. So this second calculate cancel out, and finally, what is remaining? That is Newton into meter, and Newton into meter is nothing but that is a joule. ठीक है? यहाँ पे आपको इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज गिवन इन किलो जूल, तो आप यहाँ पे इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए. सो व्हेन यू विल कन्वर्ट दैट इनटू किलो जूल, दैट विल बी लाइक 169.649 किलो जूल. ठीक है? So that will be kilojoule. So this energy is nothing but that is the work done. Okay, that is the work done. Energy and work done are same. So just get the value from here. That is del Q will be equals to du. That is 125 plus how much? That is 169.649. So can you tell me the answer from here? Yeah, Google, very good. This is 294.646. Okay, this is kilojoule. But actually, if you will do like this, then this will be the wrong answer. उसका मतलब क्या है? Wrong answer क्यों है? Because आपने initially right, Vishal? Kilojoule, very good, very good. That is in kilojoule. Vishal, your value is right. That is 294.646. But whatever the answer that you are getting, Shada, very good, 294.646. But this answer is wrong. The reason is you used this basic thermodynamic concept, okay? और basic thermodynamics के concept में क्या होता है कि like there are two system, open system and the closed system. उसमें भी again मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आंसर गलत क्यों है वो बताना चाहता हूँ कि this work done आप पॉजिटिव या नेगेटिव कंसिडर करते हो वहां पे, ठीक है? If this work done by the system, then we consider it as a positive. If this work done on the system, then we consider it is as a negative. ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था? That is a heat transfer from the work piece. Okay, आपको वर्क पीस से हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब क्या है कि आपको वर्क डन भी किसका लेना है? वर्क पीस का लेना है. मतलब अगर if this work done by the system, then it will be positive. But ये क्या है? This is energy dissipated. मतलब this is the work done by the tool. This is not work done by the work piece. अगर टूल नहीं होता तो मटेरियल कैसे रिमूव करते आप? ठीक है? So this is the work done by the tool on the work piece. इसका मतलब क्या है? वर्क पीस ने थोड़ा ही काम किया है, टूल ने वर्क किया है. ठीक है? So this should be negative. This whatever the value that you are taking, because tool is working on the workpiece. Okay, so this you should consider that is 125 minus 169.649. Please keep in mind and tell me the answer now. Is it concept is clear to you that why we are taking this negative sign? This will be like minus 44.649. That is in kilojoule. Okay, this is minus. Please keep in mind this one. This is very important. Okay, this that's why I use this problem over here. Okay, अभी तक इस तरह का प्रॉब्लम गेट में पूछा नहीं गया है, लेकिन गेट के लेवल का है, बिकॉज गेट में हमेशा ऑलवेज दे ट्राई टू मिक्स अप द कंसेप्ट. ओके, एंड this is the wonderful problem for that concept. Okay, Shada, please check the answer. It's not minus 64. Again, it's a typo here maybe. Google, what is your answer?
Okay, great. Shall we move to the next one? Two more problems are there. Yeah, Shadab, but it's minus. Please keep in mind. Okay. Okay, let's move to the next one. Very good. Very good, Google. Actually, your name is showing here is Google. Okay, can you tell me your name? Let's move to the next problem. Okay. The cutting speed is got it. Very good, Shadab. The cutting speed is 18 meter per minute. So the value of V is given to you. Okay. Uh, Shailendra sir. Okay, Shailendra, very good. Actually, it's here. It's Google 123 is written. That's why. Okay, very good. For the following data were collected from an orthogonal machining test on a steel. The cutting speed is 18 meter per minute. Okay. The rake angle is 20 degree. The clearance angle is rake angle is okay alpha. The clearance angle is not mentioned, so we are just writing that as a gamma because we can represent it by the gamma. The width of the cut is 3.2 mm. That is D width. Sorry, this is B is given to you. Undeformed chip thickness means T is given to you. Okay, because undeformed. Deformed chip thickness means TC is given to you. That is 0.25 mm. Okay. The cutting speed in the cutting direction. Sorry, cutting force in the cutting velocity direction is 80 kgf. Means value of FC is given to you. The normal force in the direction normal to the cutting velocity. Okay, normal to the cutting velocity means if this is the cutting velocity means this is the direction of FC, then perpendicular to that in this direction, that is FT. So this is FT is given to you, that is 50 kgf. Okay. Now draw the circle diagram for the forces. ठीक है चलिए first of all we are going to draw the merchant circle diagram. ठीक है. So मर्चेंट सर्कल डायग्राम आप सर्कल आप बना लीजिएगा, मैं फोर्सेस ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है. दिस इज एफ सी. सॉरी, दिस इज एफ टी. ओके, दिस इज आर. ठीक है. दिस इज this is Fs, this is Fn with normal to shear. Okay, and if this is perpendicular, then this should be F, which is the frictional force. Okay, and perpendicular to that, this is a normal force. Okay, that is N, and this is beta. Okay, एंगल लिख लेते हैं. This is alpha. ठीक है, because आपका ये वाला अल्फा होता है. ठीक है, ये this is your workpiece, so this is alpha, so this is alpha. Sorry, and this is how much? This is 90 minus beta. ठीक है, this angle is how much? This is beta minus alpha. Fine. Now ठीक है, ये आपका मर्चेंट सर्कल डायग्राम हो गया. बस इसको सिर्फ ड्रॉ ही करना है. ठीक है, you just take this one and draw it. Okay. Next is what? Sorry. First of all we have to find out the shear angle. ठीक है. Now देखिए, shear angle find out करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, that is tan phi equals to r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha. ठीक है. Alpha is the rake angle which is given to you, that is 20 degree. ठीक है. R is the uncut chip thickness ratio, that is not given to you, but for that the value of T and TC is given to you. ठीक है. So just write from here, that is R will be equals to T by TC. And T is how much? That is 0.10 upon TC is how much? That is 0.25. Okay, so can you tell me the value of R from here? R of here? .4. Okay, that is 0.40. This is 0.40 into just put the value of R over here. So tan phi will be equals to, very good Vaibhav, this is 0.40 into cos 20, because alpha is 20 here.
upon 1 minus r, that is 0.40 into sine 20. Okay, Shadab, right, it's 20 degree. Sorry, it's 0.40. Very good. So can you tell me the value of phi from here directly? Phi. 23.53. Everybody is getting the same. Please cross check. Yeah, right. Jayesh, 23.53, right. Shadab, right. This is 23.53. Very good. This is 23.53 degree. Okay. Uh, this is first Google. Yeah, Shailendra, 23.53 degree. This is the first answer. Okay. Uh, Virendra, this is actually today. This is not the first lecture, but as we have completed the machining and machine tool operations. Okay, and 2-3 lectures are pending there for the non-conventional part. So that's today I am taking means a 3-hour session, and we are covering the 20 problems in that. Okay, so one more is remaining after this. Fine. So this is the phi value. Very good. The first answer we got it over here. Now, okay. So next is we have to find out the value of shear strain. So shear strain. How to write the shear strain? Shear strain will be equals to epsilon, and that is equals to cot phi plus tan phi minus alpha. Okay, this is phi minus alpha. So phi we have already calculated. Alpha is given to us. So just put the value, that is epsilon equals to 1 upon tan phi. So that will be easy for you. So this is 23.53 plus tan phi, that is 23.53 minus 20. Okay, so just get the value of epsilon from here and tell me. Yes, Swaminathan, 27 lecture is already done. Right. Very good. Yeah, it's 2.29. Shadab, it's 2.358. So actually, I'm also getting this 2.358. Almost the same, no issue. Okay, 2.358. Okay, I'm also getting the same value. Shadab, what you are getting? Okay, 2.3. Right. Okay, so this is the shear strain. Now next what we have to find out, the friction coefficient against the chip flow. Friction coefficient against the chip flow means if this is the tool and this is the chip is flowing over there. So in between that means in between the chip and the tool interface. Okay. Yeah, Jayesh, this is 2.358, right? So we have to find out the friction coefficient, means we have to find out the value of mu. Okay, so again, mu equals to what we can, how we can find out the value of mu, that is 10 beta, means what are the possibility, first we are going for that. So agar beta हमें available है हमारे पास, so we can get the value from that. Okay, but in case agar beta नहीं given है, so we can go for the f by n. ठीक है, f that is a friction force and n is the normal to that. Okay, and also we have I have told you before as well that जब भी आपको देखिए आपको FC और FT की वैल्यू गिवन है या फिर कोई भी फोर्स गिवन है, ठीक है, और आपको म्यू पूछा है, that's what I'm saying exactly जब भी आपको म्यू पूछा है और फोर्सेस गिवन है, तो always try to go for the what, मतलब f by n. Okay, always try to go for the f by n. Do not use this one. Okay, because anyhow आप इसको कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे आप 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा से, 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री से, और ये क्या है आपका, ये एजम्पशन से आया है. ठीक है, ये एजम्पशन से आया है. नाउ एजम्पशन आया है, इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें हमने मैनिपुलेट की हैं अकॉर्डिंगली टू रिक्वायरमेंट, तो दिस विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ म्यू. एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको f by n ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अब चलिए f by n यूज करते हैं. सो म्यू इक्वल्स टू f by n. ठीक है,
F जो है दैट इज, अब आपको F कैसे निकालेंगे, देखिए दिस इज आई एम यूजिंग दिस डायग्राम. Okay, this is the diagram. Okay, so merchants are, okay, sorry, this is the diagram. इस पे निकाल लेते हैं, that is mu equals to F by N. So देखिए F जो है this is your F, okay, and this is beta minus alpha, this is 90 minus beta, so overall angle will be equals to 90 minus alpha. So this FC component of FC in direction of F, that will be equals to cos 90 minus alpha, so that will be equals to FC, means अगर मैं आपको simply लिखूं तो this will be FC, this is your F, okay, this is your F, this is your FT, ठीक है. So this is 90 minus alpha and this is alpha, so now a component of FC in this direction, so this is FC cos of 90 minus alpha, so that will be sin alpha plus FT cos of alpha, ठीक है, upon n किस डायरेक्शन में आपका, and that is normal to that, okay, so this is normal. If this is, both are perpendicular, this is perpendicular, so this is 90 minus alpha, then this is how much, this is alpha, so this is FC cos of alpha, और आपका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, this is 90 minus alpha, so again FT cos of 90 minus alpha मतलब sin FT sin alpha, ठीक है. Now alpha आपको given है, FT आपको given है, FC आपको given है, just get the value from here. This mu will be equals to FC. FC will be equals to how much, that is 80, FT कितना है आपका 50 and alpha कितना है 20 degree, so I am just putting the value directly, okay. FC is 80 into sin 20 plus FT, that is 50 into cos of alpha, that is 20, okay, upon FC, that is 80 into cos of alpha, that is 20, minus FT, that is 50 into sin 20 degree. Can you get the value of mu from here? This is a wonderful problem. Yeah, Soumya, right. 1.28. Anyone else? I'm just waiting for one more minute if anybody is getting the same answer. Yeah, Shailendra, right. It should be less than 1. Yeah, exactly. We are getting 1.28, right? But it should be less than 1. Roshan, yeah. Shadab, both are getting the same answer, like 1.28, but as the Shailendra said, that it should be less than 1. So it should be less than 1. So how it can be possible? Means whatever the formula that is available to us, and we are deriving it from the merchant theory only. So whatever the value that you are getting, that cannot be wrong. Okay, so अगर मान लीजिए कि इस तरह के केसेस बनते हैं, so like this problem I discussed one of the first live session in lecture number 24, that why this value is greater than 1. Okay, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है, प्लीज कीप इन माइंड दिस वन. इसका रीजन देखिए, म्यू की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है. अगर यहां से हम देखें तो म्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? वैल्यू अल्फा का वैल्यू ज्यादा है सर. यस, सो एग्जैक्टली आई एम सेइंग अल्फा की वैल्यू ज्यादा है. सो how it should be less, okay, मतलब obviously it should be lesser than 1 only, otherwise it cannot be possible, not at all possible. Okay, so अगर आप यहाँ से देखेंगे that what the value you have kept to find out the value of mu, आपने कौन कौन सी वैल्यूज को रखा है म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए? सबसे पहले आपने एफसी रखा है, फिर आपने एफटी रखा है, और आपने उसके अलावा अल्फा रखा है, और तो कुछ नहीं रखा. मतलब 3 वैल्यू रखी है. मतलब एफसी की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो वो दैट इज 80 kgf,
ft की अगर मैं बात करूंगा दैट इज 50 kgf एंड म्यू की अगर मैं अल्फा की अगर बात करता हूं दैट इज 20 डिग्री। ये तीनों ही वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ये जो वैल्यूज आपको गिवन है ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है मतलब ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं है, ये जस्ट रैंडमली कुछ भी पिक करके दे दिया है आपको। उसका रीजन ये है कि उस प्रॉब्लम आप प्लीज राइट नाउ इट विल बी डिलेड, अदरवाइज आई विल टेक दिस concept over here. Now lecture number 24 prefer करिएगा, and in that I explain that in a very well manner, because I consider two problems and both are similar. So there I consider this concept because whatever the data that is given to you 80, 50 and 20 degree, that is not exactly the experimental conditions. Okay, so what we can do is, अगर हम लोग मान लीजिए कि 50 को कम as it is रहने देते हैं, तो हम 80 को क्या करते हैं, 80 ना लेके हम लोग 100 ले लेते हैं। 100 ना लेके अगर हम लोग इसको 200 ले लेते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली द म्यू वैल्यू विल बी चेंज एंड दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसमें अब जो भी हमें डेटा गिवन है, अब हमें उसके ऊपर आंसर फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट व्हाट वी आर यूजिंग इज देयर इज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा exactly, so I'm right, 24 lecture के last में है। So if we have to get the exact data, then what means whatever the value is given to you, that is 50, 80 and the 20 degree. So for that we will use the classical friction theorem. This value basically we do this classical friction theorem, basically we got it from the experimental data only. जिन्होंने भी experimental किया है from that only they derive this formula. Okay, now क्योंकि क्या होता है कि गेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक में जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उसी में से पूछा जाता है, नहीं, अदरवाइज कंपटीशन लेवल कैसे बढ़ेगा अगर everybody is getting 100 marks। तो IITs are doing these things that जो हायर एजुकेशन होती है लाइक एमटेक में जो लोग रिसर्च करते हैं, if they are developing some new formula, sometimes they are asking the problem on that as well. Okay, so that is a classical theorem that is given this formula, that is mu equals to ln 1 by r upon pi by 2 minus alpha. Okay, please keep in mind and write it in your synopsis. Okay, whenever you are getting this value that is 1.28, ओके तो अब जब गेट में अगर आप ये वैल्यू या इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में अगर ये वैल्यू आपको मिल रही है, तो आप उनको कहने थोड़ी जाएंगे सर के हाउ कैन यू गिव दिस डेटा, मतलब उस टाइम पे तो कुछ नहीं कर सकते, एनी हाउ वन ऑफ द ऑप्शन यू हैव टू टेक, और अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल आंसर में है तो यू हैव टू राइट समथिंग, सो वी हैव टू फाइंड आउट द अदर वैल्यू। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस थ्योरम दैट इज अ क्लासिकल फ्रिक्शन थ्योरम। प्लीज कीप इन माइंड दिस वन एंड राइट दिस फॉर्मूला। क्या है मैं बता देता हूं, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू ln upon ln into 1 by r। 1 by r is what, that is the uncut chip thickness ratio, ठीक है, pi by 2 and minus alpha, alpha is again the rake angle, that is not in degree, please keep in mind that is in radian, ठीक है। so now just put the value that is ln mu, देखिए ln r की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था, phi को कैलकुलेट करने के लिए हाउ मच, दैट इज 0.440, ठीक है। सो दिस इज 1 by 0.40, ठीक है, अपॉन पाई बाई 2 माइनस अल्फा कितना आपका 20 डिग्री, सो दिस इज 20, ओके, बट रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है, सो दिस विल बी लाइक मल्टीप्लाई पाई बाई 180। ओके, सो फ्रॉम टेल मी द वैल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम हियर। So this relation is also known as Varanya, exactly I don't know about that because what from where from the research paper that I have taken, there it is written like classical friction theorem. Okay, so if means right now I cannot say that whether it's what the relationship, what the formula that you are talking about, but after completing of this lecture or this class, I will post it that in the comment box. Fine. Yeah, that. Okay. Let me check the answer. How much I am getting.
Okay, this is 0.7499. This is 0.7499, and if they are asking up to the 2 digit, then this will be equals to 0.75. Shada, very good, Soumya and Shelan. Okay. So what others we have to find out? So friction coefficient against the chip flow is done. Fine. Friction force on the rake face. Okay. Friction force on the rake face. Now this is the rake face. Okay. This is the friction force on the rake face. Means this F value we have to find out. Okay. So how we will find out this F value? Okay. So for that we can use this one. Okay, so just get the value from here, that is F will be equals to FC sine alpha plus FT cos of alpha. Okay, just get the value, that is 80 into sine alpha is how much, that is 20 degree, plus FT, that is 50 into cos alpha is 20 degree. So can you tell me the value of this? N. Answer, okay, Newton, 70.34, right. Guys, whatever the answer that you are getting, 74.36, 346, okay, that is in Newton, and this answer is, this value is correct, okay, this value of F is correct, okay, but this answer is wrong. This answer, if you will follow this formula, yeah, Shailendra, you are right. Vishal, you are also right. Whatever the value that you are getting, that is correct. Means it will be like 74.346 only. Okay, but whatever the answer that you are getting means this means we do not have to follow this formula. Why? Why? Because recently you calculated this mu value. Yeah, exactly. That's what I'm saying. Recently you calculated this mu value. अगर आपको F की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर आपको इसी से कैलकुलेट करना है तो आप म्यू की वैल्यू को फिर यही रखिए ना, आप इसको चेंज क्यों कर रहे हैं, आप इसको चेंज क्यों कर रहे हैं, आप यही रखिए। अगर आपने म्यू की वैल्यू को चेंज किया है, मतलब मान लीजिए आपको पता लगा कि लाइक दिस वैल्यू इज नॉट करेक्ट, ओके, दिस वैल्यू इज नॉट करेक्ट, तो वी आर कैलकुलेटिंग अनदर वैल्यू, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया, ठीक है, देयर इज सम अदर वैल्यू ऑफ म्यू, तो इसका मतलब क्या है, अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चेंज होगा तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी तो चेंज होगा ना, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स जो है ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रिलेटेड भी चीजें, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो सकता है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वजह से भी फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, लाइक ठीक है, तो लाइक म्यू इज यू आर टेकिंग ओवर हियर दैट इज 0.75, बट जो आपने ये म्यू कैलकुलेट किया है इसमें ये जो टर्म है, इस टर्म को कहीं पे भी आप इसको कैलकुलेट करने के लिए नहीं रख रहे हैं। अब अगर आप मान लीजिए आपको f कैलकुलेट करना है तो म्यू की वैल्यू को मैं किस तरह से प्रेजेंट करूं वहां पे, कि म्यू की वैल्यू जो ये मेरे i है, ठीक है, इसको मैं किस तरह से प्रेजेंट करूं कि वो f में भी आ जाए या फिर उसका इफेक्ट जो है वो f में भी आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि उसके लिए ये जो आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपको fc गिवन है, ठीक है, आपको FC यहाँ पे गिवन है, आपको F यहाँ पे गिवन है, कैन यू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दीस टू, ओके, अगर आप इन दोनों के बीच में नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं तो क्या आप R के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं, सो यू कैन मैनिपुलेट, तो अगर आप R के बीच में फाइंड आउट करेंगे, सो दिस विल बी लाइक FC will be equals to R cos of beta minus alpha, तो यहाँ से R निकाल लीजिए, R will be equals to FC upon cos beta minus alpha, ठीक है। सेकंड इज f की टर्म में अगर निकालेंगे, सो दिस इज द cos बीटा माइनस अल्फा, सो f इक्वल्स टू r cos 90 minus बीटा, सो दिस इज sin बीटा, तो r will be equals to f upon sin बीटा। नाउ
both value representing the value of resultant, so just equate it. Fc upon cos beta minus alpha equals to f upon sine beta. So just get the value of f from here. So that will be equals to Fc into sine beta upon cos beta minus alpha. Now alpha is given to you, Fc is known to us, beta is not given. तो बीटा हमें कैलकुलेट करना है, बट बीटा आप इस बार आप यहां से नहीं कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इससे नहीं कैलकुलेट करोगे। म्यू इक्वल्स टू 10 बीटा जब रखोगे, म्यू इक्वल्स टू 10 बीटा जब रखोगे तो म्यू की वैल्यू ये नहीं रखोगे, आप ये रखोगे, ठीक है, 0.75, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सो दिस इज म्यू, दैट इज म्यू इक्वल्स टू 10 बीटा, so that is equals to 0.75. From here tell me the value of beta, how much you are getting? Ah, 36 point, yeah, 36 point, very good, very good Soumya, very good Jayesh. 36 point, अगर मैं 2 डिजिट तक लिखूं तो इट विल बी लाइक 0.87, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है विशाल, वेरी गुड, 869, 36.869, वेरी गुड, ओके। So this is beta. Now just put the value of beta over here. Okay, so this will be like Fc. F will be equals to Fc is how much? Fc तो आपको direct given है, just put the value that is 80 into sine beta. Yeah, very good, Weber. 36.87. 2 you can write. Okay. So beta is how much? That is 36.7. 36.87 upon cos beta, that is 36.87 minus alpha. Alpha is how much? 20 degree. ठीक है? So just tell me the value of f from here. Very good, Sam. It's 50.158. Right. Very good. Anyone else? Please confirm. Yeah, Jayesh, right. It's 50.158 plus. Please keep in mind that this the unit of this is in kgf. Okay, so Newton. So I was just waiting for your answer. This is not in Newton. This is in kgf. Okay, this is in kgf. This is not in Newton. Please keep in mind. Okay. Yeah, Shadab, right. It's 50.158. Very good. Yeah, Shailendra, very good. It's 50.15 up to 2 digit or 16 also you can do. Okay. So is it clear to you now, guys? Shall we move forward? There is a last one more problem is there, and it's 11:56, so I can take that one, and just after that, shall we proceed? Okay. Okay, let's come to the last problem. Today's last problem. Okay, so a batch of 10 cutting tools could produce. Okay, Shadab, fine. So thanks. So a batch of 10 cutting tools could produce 500 components. Okay, while working at 50 RPM with a tool feed of देखिए n rotational speed मान लेते हैं. Feed is tool feed is 0.25 mm per revolution. Depth of cut small d is given to you, that is 1 mm. ठीक है. A similar batch, मतलब देखिए अब देखिए इसमें क्या है कि जितनी प्रॉपर्टीज सिमिलर बेस जब लिख दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको अभी गिवन है, मतलब जो वैल्यूज पैरामीटर्स हैं अभी अगर गिवन है इस प्रॉब्लम में तो वो ठीक है, अगर नहीं गिवन है देन यू शुड कंसीडर इट एज अ सेम whatever the data is apart from not given to you. Okay, so similar batch of 10 tools of the same specification, mention भी कर दिया है same specification means जिस मटेरियल का टूल आप 5
कंपोनेंट्स 500 कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे थे, द सेम मटेरियल यू आर यूजिंग ओवर हियर मींस द सेम टूल ऑफ द सेम मटेरियल, ओके, could produce 122 components. वहां पर आप 500 components प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे आप 122 component प्रोड्यूस कर रहे हैं while working at 80 rpm मींस अगर आप इसको फर्स्ट कंडीशन कह दीजिए दैट इज n1, तो ये आपका n2 हो गया दैट इज 80 rpm with a feed of 0.25 mm. वहां पे f1 का था नहीं बट feed is same, तो f ही लिख लीजिए सिंपल. And depth of cut is also same, so you can write d1 d2 both are equal, f1 f2 both are equal, so that is f and d only, okay. Now how many components can be produced with one cutting tool at 60 rpm? तो देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया है कि दो कंडीशंस आपको गिवन है अलग अलग, ठीक है, तो इसका मतलब टूल लाइफ का क्वेश्चन है, ठीक है. टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन को अगर हम यूज करते हैं दैट इज v t raised to n equals to constant, ठीक है. और मान लीजिए कि अगर आपको सिंपल n जब दिया है तो आप इसको n भी यूज कर सकते हैं दैट इज n into t raised to n equals to constant, ठीक है. दो कंडीशंस के लिए मुझे इस इक्वेशन को लगाना है, सो दैट विल बिकम n1 into t1 raised to n equals to n2 into t2 raised to n, ठीक है. तो n1 है दैट इज फर्स्ट कंडीशन रोटेशनल स्पीड, n2 जो है दैट इज सेकंड कंडीशन रोटेशनल स्पीड, t1 जो है दैट इज टूल लाइफ, ओवरऑल टूल लाइफ, ओके, of a single of a cutting tool, okay, when we are producing the 500 components, okay. तो देखिए tool life तो मतलब 10 cutting tools जो यूज कर रहे हैं हम with a single component, मतलब सॉरी with the same material, okay. तो जो ओके, तो देखिए कोई एक टूल कंसिडर कर लेते हैं जो टूल लाइफ जो है उसकी, ओके, टू प्रोड्यूस दी वन कंपोनेंट टूल लाइफ जो है दैट इज कैपिटल टी है, मान लेते हैं कैपिटल टी है, ठीक है, बिकॉज इसमें टूल लाइफ आपको गिवन नहीं है. इसमें क्या गिवन है, 10 कटिंग टूल्स यू आर यूजिंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द 500 कंपोनेंट्स व्हेन दिस इज द कंडीशन. 10 components again you are using and you are producing 122 components when this is the condition, okay, but tool life is not given to you. तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए कि आप 10 कटिंग टूल्स यूज कर रहे हैं, तो वन कटिंग टूल विल प्रोड्यूस हाउ मेनी कंपोनेंट्स फॉर द फर्स्ट कंडीशन दैट इज 500 by 10, okay, so how many components, that is 50 components can be produced by the one cutting tool, okay. So how much tool life will be there, 50 into t, एक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए टूल लाइफ है दैट इज t, तो टोटल हाउ मेनी कंपोनेंट्स वी आर प्रोड्यूसिंग बाय दैट पर्टिकुलर टूल, 50 कंपोनेंट्स, तो हाउ मच टूल लाइफ विल बी देयर, दैट इज 50 into t, समझ में आया, so that is 50 into t, so this is the total tool life when you are using 50 rpm 10 cutting tools producing the 500 components. Similarly, when you are using for the second condition, you are using 10 cutting tools, okay, and producing the 122 components, okay. So how much one tool will produce the components, that will be equals to 12.2 components. One cutting tool will produce 12.2 components, ठीक है. तो total tool life कितनी हो जाएगी, that is T2 will be equals to 12.2 into T. Is it clear to you now? Is it clear? Then only we should proceed. अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ. Is it clear to you? Okay, great, great, Somil, Vishal, and Jayesh. T2. Now just put the value over here in this equation, first equation. Shadab, right, very good. So is that just a wait, let me
Sorry for this technical glitch. Okay, so now okay, so now this is we are keeping this one like N1, that is 50 into T1. T1 कितना था? That is 50 components, okay, by single tool into T raised to N, okay, equals to N2. N2 is how much? That is 80 RPM. So this is 80. Sorry, this is 80 into how many components we are producing, that is 12.2, and total tool life will be equals to 12.2 into T raised to N. So what we can do is just keep bring this side over here and this portion 50 over here. Okay, so when you will do like that, that will be 50 into T upon 12.2 into T raised to N, that will be equals to 80 by 50. ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. So just take the ln. So when you will take the ln, can I write like this? That is n will be equals to ln 80 by 50 upon ln 50 by 12.2. Is it okay? And just get the value of n from here. Can you tell me the value of n from here?